Can you hear now? Yes, can hear you now. Okay. Yeah, I will then remove this phone. Okay. Okay then. Good morning. Good morning, everyone. My name is Norpulat Daniyarov, and I am a finance officer, IFAD finance officer based in Hanoi, Vietnam. Finance team for Asia region, Asia Pacific region for IFAD is based in Hanoi. We have a team, very small team, 5 people working from Hanoi to support all projects in our region, in Asia Pacific region. I'm a finance officer for India portfolio. I'm also responsible for IFAD's project as a finance officer in Sri Lanka, Nepal, and Vietnam, 4 countries. And today I will be presenting financial management aspects of the REACT project, role, procedures, and policies, and IFAD's requirements that you will need to follow during the implementation. During my presentation, you can stop me and ask any question you want. Will be open discussion, I hope. I also hope that we had a very good meetings during the last 4 days and already had a good understanding of the project itself, its components, other requirements, IFAD's other policies and procedures. And today we will continue and add on additional FM related policies and procedures. FM policies are one of the most important requirements for IFAD funded projects. Most of the requirements are included in the general conditions or a financing agreement or other documents that regulate IFAD's operations. Let me share my screen and I will start presentation with my slides. Let me share first my screen. Can you see my screen now? Yes. Okay. Good. 1 second. As I told, Norpulat Daniyarov, finance officer, IFAD, and usually we will be working with consultants based in India to supervise projects and support you during the project implementation. As a finance officer, I'm responsible to help you whenever you need a financial management related support and advice. And I will make sure that you get timely support and advice, and including the trainings, maybe other support workshops that will be required during the project implementation. It is my understanding that REACT already recruited necessary finance staff to work on the project, and you will be working closely with me on financial management related issues. Can I move on? Okay. As an introduction, I would like to mention the founding agreement establishing IFAD. When IFAD was established, member countries signed an agreement establishing IFAD. And in this agreement, IFAD
made a commitment that funds that will be allocated by member countries and donors and from different other sources will be used for intended purposes, and this be attention to economy efficiency and social equity. And if as an international UN special agency agreed that it will have proper policies and procedures to ensure funds, financing resources allocated by fund for our projects in member countries will be used for intended purposes, for the purpose for which the financing was provided, and also economy efficiency and social equity. And we have to make sure the IFAD's obligation is duly met during the operations, and therefore the financial management function is to ensure that IFAD's obligation is duly met. And we have a financial management department of IFAD is responsible for this specific obligation of the fund. One key document during the implementation you will need is Project Financial Management and Financial Control Handbook for Borrowers. It is on your screen. This is a link to this document, and if you need this document in PDF form, please let me know. I will send you a link. Also, I can send you a PDF file. This document is very a small document which includes key principles and policies that you need to follow during the implementation of the project. This document, this book, handbook will be your key document because you will be referring to this document and learn from this document how to work with IFAD, how to request funds from IFAD, also how to report on project financial progress and financial reports, and also auditing requirements, when to submit audit reports to IFAD, and the requirements on auditing and accounting standards. Do you have any questions so far? Hello? Hello, can I continue? Hello? Okay. Now, fiduciary obligations includes financial management and procurement. We will be, presenting few procurement-related aspects as well, because procurement and financial management is closely linked to each other. You will have a procurement sessions later on, I think in November, and Shriram and his team will be presenting detailed procurement procedures you need to follow during the implementation, but I will be touching very generic terms, the procurement aspects, but fiduciary means financial management and procurement. I will be touching mainly on financial management aspects, but as I mentioned, Shriram will be later presenting you, and we will have a dedicated workshop on the procurement aspects. As a financial management specialist, probably if you were involved in the design stage, we will start getting involved with
during the design stage. Financial management consultant or financial management officer from IFAD usually joins the design mission. And if you were part of the design design team from the government side, you probably remember the financial management person who came to the state and discussed with you different aspects of the financial management. Who will be responsible for financial management, what kind of systems you will have, what kind of controls you will have, funds flow, reporting, all the different other aspects. That all will be documented in the IFADS official documents and presented to the IFADS executive board for approval. And after the approval by the executive board and signing of the legal documents, in this case financing agreement, we then move to the implementation stage, where we'll help you to withdraw funds from IFAD to finance the project operations. You will be using IFAD's systems. The first most important system is ICP, which is IFAD's client portal. You have to have an access to the system, and you will be asking funds from IFAD using this ICP system. But in your case, in India projects, we have a different arrangement. You don't have direct access to ICT, but Minister of Finance has it. In Delhi, Minister of Finance has a special unit responsible for working with international financial institutions, including IFAD, and they will be requesting funds from IFAD, but based on your initial supporting documents. In your case, it will be a reimbursement method. Initial advance you will get from the state government to implement the project. After spending, every quarter, you will be sending to Minister of Finance in Delhi a request to reimburse the funds. And then in Delhi, Minister of Finance, which has an access to IFAD's ICT system, will send to IFAD withdrawal applications, and we will be sending funds to Minister of Finance in Delhi. And then Minister of Finance in Delhi will be transferring the received funds to your state government, and then you will get funds from the state government to your project account. This is a usual standard funds flow, which will be in practice during the implementation of the project. After receiving funds from state government, from us, after the reimbursement, we have to follow the procurement rules of IFAD and sign contracts for delivery of goods, services, equipment, civil works, different things in line with the project design. Then you have to, after the signing, following a proper procurement procedures, you will be transferring funds to different suppliers and contractors for services delivered, goods delivered, civil works completed, and other training completed, maybe other things in line with the project activity. And we are also responsible to ensure that you spend project funds for only project related expenditures.
you will be primarily responsible for spending project funds, but will have a oversight role over the operations of the project. And yes? Okay, no questions so far? It's not, your voice is not clear. Can you please repeat? Yeah, speak to mic, please. Okay. Amongst the audience, any questions? Lalit? Not as of now. Anybody from this side? Robert, my request is that you continue. As of now, they are listening. They'll come with the questions a little later on. Okay. Thank you. Okay. And during the project implementation, we will work together with you to ensure efficient implementation of the project. We need to achieve the development objective. We have a specific development objective. I think you had detailed discussion about the development objectives and also law frame, what is the target, and we have to ensure the finance specialists responsible for financial operations, we have to help the project to achieve these goals, targets. If the law frame says we have to reach 10,000 farmers to help them to improve their farming practices, we have to ensure we use the project funds efficiently and economically to achieve this 10,000 farmers to improve their farming practices. And we have support. Mainly project activities will be undertaken by the project team responsible for the implementation of the specific project components and activities, but overall is supported with financial advice, financial resources, and making sure all these financial operations are conducted in line with IFAD's legal regulations, and also Indian government rules. We have to make sure you follow, first of all, the local government regulations, and also you meet requirements of the IFAD, financial management and other regulations of IFAD. And we have to, as a last point, every year we have to report back to Executive Board and IFAD and report to them about the use of funds and accountability. We have to report to the board that, for example, in your case, our project in India using so much of funds during the year, and we confirm efficient and economic rules and procedures we apply to finance project activities. And that's our financial management department's role to report back to the stakeholders and confirm the use of funds, efficient use of funds. This is a brief description of the role of the financial management during the project design, implementation, and completion, and also reporting back to the executive board and the stakeholders. The next one, we ask you to have adequate
financial management systems during project implementation. What is the adequate financial management systems and processes? We would, ask you provide assurance that the funds have been used for their intended purposes, which means that you are following all the rules of IFAD and government, and you are funding, you are using all the resources to fund exclusively for the project needs, business economy and efficiency. Ensure accountability of individual institutions in charge of the funds administration. Accountability of individuals and institutions. You will be working with different district units in your state. Also, you will be working with different institutions, organizations, NGOs. And we have to ensure that each individual and institution involved in the project implementation are held accountable for the activities they are performing within the project implementation. Which means we have to have controls, we have to have policies, how each individual and institution should, behave, should follow what kind of procedures and policies, and have a specific system to control that they follow the rules. And you have to make sure the systems produce reliable and timely information for decision making. You send us quarterly financial reports, annual progress reports, other ad hoc reports, so that we can make together with you a proper decision how to move the project forward. In some cases, maybe we will need to adjust the project activities during the implementation to meet to better focus on critical areas. For this kind of decision making, we will need a good reports, timely and reliable, accurate reports coming from your financial management systems. And also, financial management system will be subject to independent review and supervision by external and internal auditors and entities also. We will be asking you to conduct internal audits of the operations and also annual internal audit of the financial statements, and we will be relying on these internal and external audit reports to see the controls in place, assess the reliability of the controls in place. There are also responsibilities. We have to mention that in the financing agreement also, we clearly say borrower is primarily responsible for financial management arrangements. You should have a systems in place that ensure project funds are used for intended purposes with due attention to efficiency and economy until the project is fully completed and closed. From day one, from the effectiveness date until project closing date, you have to ensure reliable controls, internal control framework in place for the project. Our role is to support you and the borrower, in the case of the government of India, to meet your fiduciary obligations. We will come to you at least once every year during the supervision missions, and walk with you to explain to you what are the requirements of IFAD on financial management. Also, we will support as needed during the implementation support missions, also at least once a year, and
and support you in any financial management aspects of the project. Also, we'll be organizing different trainings like this one and help you to understand changes in maybe if there are changes in IFADS policies and procedures. Have workshops on different aspects of the IFADS financial management and other regulations. And also, we will be asking you to send us quarterly financial reports, and we will be working together with you to ensure you submit timely and accurate financial reports. This is, the IFAD's role to help you to meet the fiduciary obligations. Now, IFAD has a very different level of documents and policies. Higher-level policies and procedures includes policies and criteria for IFAD financing. You don't have to know all these policies and procedures for financial management, but as a team, as a project team, you need to be familiar with this policies and criteria for IFAD financing. And we have also general conditions. General conditions are a part of the financing agreement. The financing agreement says general conditions are annexed to this agreement and part of the overall financing agreement. Which means, as a borrower, the government of India and project implementation unit staff in the state, you need to follow and meet all the requirements. The general conditions may, change from time to time. IFAD introduced some changes and amendments to them, and when there are changes, we communicate to all project staff and borrowers, and you will get notified. And you will have to follow the revised, amended provisions of the general conditions. And most important document for you is the financing agreement. And probably you have seen signed financing agreement, signed by IFAD's president and also by official of the Minister of Finance of India, Republic of India. And it includes key obligations of parties, in this case, government of India and IFAD. And as a government of India, after signing this financing agreement, they transfer their obligations to the state and PMU, to you, who will be, on a daily basis working on this project implementation. And you will be responsible for obligations of the government of India. But as a rule, as a legal, system, tradition, just signed by the Minister of Finance official, but because of the regulations and policies of the government, it's, the obligations of the government of India is transferred to the specific state and, in this case, organization PMU of the project. Also, additional detailed guidance we have also, in case you need more detailed regulations and rules of the IFAD. The key one, as I mentioned, is project financial management and financial control handbook for borrowers. The other one is conceptual framework for financial reporting and auditing of IFAD finance projects. This document regulates financial reporting and auditing, what kind of accounting standards and audit standards acceptable to IFAD, what kind of
policies and rules you have to follow during implementation in terms of financial reporting and auditing. That document is also available to you, and please let me know and send an email. I will forward your PDF form of the document to you, and you can print out and read and know, understand the IFADS requirements. And also you have, as a part of the financing agreement, project financial management and financial control arrangements letter. This letter includes detailed guidance on what kind of reports you need to provide to IFAD, when and how. All this detailed information included in this document. And most probably your project team has already financing agreement, and this letter, FCL letter, also attached to this financing agreement. Please read it and understand it. Whenever you need a clarification, you may need to understand some clauses, provisions of the document. Please let me know. I will try to explain to you and what means each clause and provision of this document and how to meet the requirements. I will be moving to the next slide. I understand you will stop me if you will need additional comments or additional explanations. Thank you. Just let me come in, amongst the BPMs, do you have any question now? Let it not be a one-way communication. I'd like you to participate. कपिल, आपका कोई सवाल जो अभी हो रहा है इसके बारे में, या आपको सब समझ आ रहा है और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ जी, भट्ट जी, दोनों भट्ट। Are there any questions from anyone, finance people particularly, towards that? अभी तो नहीं है सर। Because otherwise, if there are no questions, either we are not following or we have understood everything. And either case is not too good. So my request is, as we go along, please be more interactive. Thank you very much. Let's continue. Okay, yeah, you're right. I would like more active participation in questions so that we have a good, productive discussion instead of just me presenting the slides. Thank you. Should I continue? Yes. Okay. So we continue, and then I think we'll bring them in after maybe 5 minutes. By the time they can organize their reports. Okay. Let me present a few more slides, and we can have a 5-minute break to discuss. Maybe give them some opportunity to think about and ask questions. Few more slides then. Key principles for financial management. Eligible expenditures is a key one. Please note that if IFAD announces expenditures ineligible, we will not be financing those expenditures. And Indian government or state government or the federal government will need to finance those expenditures. Eligible expenditures means cost of goods, works and services procured for the project are reasonable and required to meet the project's objectives. And this is important. The cost is reasonable. You follow to make sure that the cost for the goods and services and works are reasonable. You have to make sure you follow procurement procedures.
And if you have a good procurement system in place, then you will get the most, the cheapest that meets a minimum quality and other requirements for goods and services. Which means that you are procuring goods and services at reasonable price, which is consistent with the market conditions of the implementation of, within the region of the project implementation in your state. And during audits, during supervisions, during any other review of the reports, if we decide that the project is ineligible because you did not follow maybe procurement rules, or you did not follow financial management rules, or you maybe did not follow other, you procured something which is completely not required for the project. In this case, we will declare it ineligible and ask the government to finance it, if it will not be financed. For example, you're in your area, you are implementing a project. And for this project, in a very remote district, one of your partners buy a very expensive car. And this car was not approved by the IFAD, not included in the procurement plan, maybe, or you did not follow the procurement procedures that you had to, IFAD's procurement procedures, or it was completely not required to meet the project objectives. For example, maybe car is not required in a remote area to implement the project, and it has zero value for the project to meet its objective. In this case, we may come and say this car was purchased without following the rules and requirements of IFAD, and it's ineligible for IFAD financing. Then we will not be financing it. Then you have to ask state government or federal government to finance this one. We don't want to have any ineligible expenditures because it will create a lot of tension between government of India, between the state government, and between you and IFAD. We don't want to have this kind of expenditures. Therefore, please make sure you follow all the rules, procurement rules, first of all, and financial management rules during the implementation, and procure goods and services and pay for goods and services after signing a proper contracts, and also after following proper adequate procurement procedures and policies for goods and services that are required and needed to meet the project's objectives. And always make sure you include all these expenditures in the annual work plan and budget. If you purchase anything which is not included annual work plan and budget, it will be ineligible. I think already IFAD team already communicated to you. You will be submitting to IFAD annual work plan and budget before the start of the year. And in this document, you have to mention all procurement and all goods that you and services and work you plan to procure during the year, and IFAD needs to issue no objection to this document before you start spending. Financing taxes, it's not, it is allowed if it is, it meets some several, conditions. But specifically for RIA, taxes are not allowed. In some projects, we may agree to finance taxes, but depends on the circumstances and agreement with the government, and overall taxes
assessment by World Bank and IFAD and IMF in the country. In some projects we allow and we finance taxes, but in your case, RIAP cannot finance taxes. Accounting and financial reporting. Norpulat, just a minute. There's a question from one of the members in the audience. Please take the mic. Please, yes. Introduce yourself and then. Hello, may I audible, sir? Yes, yes, please go ahead. My name is Sureshwan and as a finance consultant in REIT. I asked you one question about the reimbursement of SOE. You have to clearly mention that IFAD is not reimburse our taxes. The taxes is borne by under the GST. I want to ask whether the some bills have been charged a service charge at the rate of nominal service charge 2.5% and whatever the service charges, because it is not a part of a duty and taxes. So can be reimbursement as an eligible expenditure or not? Okay. I have an example. Suppose we are hiring a staff from Upnal. Upnal will be charging a nominal service charge 2.5%. It is a part of an eligible expenditure or not? Because GSTs are not a part of eligible expenditure. I understand that. But my question is, service charge is a part of eligible expenditure or not? I need to understand what is the service charge. The service charge is paid to state budget as a tax? Actually, sir, they are providing a staff, so they have charged some nominal service charge. It is a part of her income. So at least this is not a part of basically the duty and taxes, which is deposited to the government. So can be charged under the eligible expenditure? Because it is a part of a Upnal income, 2.5%. So let's say an example. Yeah, if it's a part of the government income, it's a tax. You know, it is a maybe federal tax or maybe state tax, but it's a tax, and therefore it's not allowed. In this case, you know, we have enough resources allocated from the government to finance the project activities, and we have to check the cost tables. I don't know the exact details, and I will check and let you know. Probably if it's income for the state government, a local level tax, then it should be financed by the state government, not by IFA. But I will check the cost tabs of the project, and I will confirm later, maybe next week. Please remind me, please send me an email. But in general principle is that if the tax, irrespective of the federal tax or state tax, it is not allowed. We don't finance for this project. Okay. I shall explain. Basically, service charge is not a tax. It is not a tax. This is charged like a management fee, like any other HR is charging. Your case, in our case, Upnal is an HR agency. In our case, also there is one more HR agency that's like Industries Limited. Both are charging their fees. So service charge, what is the 2.5% is a service charge, not a tax. Okay. Similarly, in the case of inductors, they are charging management fees of 5 to 6%. It is their income. It is in the nature of a management fee. Nature of management fee. Secondly, Upnal is not a government agency. Upnal is an autonomous body. They are paying taxes from their sources. They are level to their income tax. Okay. They are paying income tax. They are paying all taxes. So it's basically is an autonomous body. So service charge, we should differentiate between the service charge and taxes. If it is a service tax, in case of excise or other cases, that but excise is not applicable in our country now. So in case of taxes, it is not chargeable to IFAD expenditure. We should clearly have to see each and every invoice, and in any invoice, if there is GST, there is another source of tax that is going to the local government or to the central government directly.
So that is not being charged to the IFAD expenditure. That is clear. We should not go to the financing sharing in the given in the cost table. It is given 80-20 or 90-10 or whatever that. In case there, I can give you an example. If you are purchasing a bike or motorcycle or car, and IFAD cost table said that it is 80-20 agreement, 80 to IFAD in their cost table. But as you know, in motorcycle or vehicle or four-wheeler, it is tax is something around 28%, not below 20. So that 28% will not be charged from IFAD. Sir, I understand whatever you said that. My question is still that I already told them 2.5% is the income of Upnal, not a charge of the government income. So I know that understand it is a part of eligible expenditure. I think it's over. Okay. And if you're talking about the purchase of vehicle, so it is a capital nature of goods we have to purchase. So it is a provision under the GST. If you have to any certain type of goods you purchase, the input tax can be credited in last over 3 years. But in our case, we have to book the expenditure as 100% at the time of procure, at the time of purchase of any vehicle which is related to a capital nature expenditure. No? Basically, the question is whether any expenditure is chargeable to IFAD or not, or any tax is chargeable staff or not. Only this is the question. What a clarification that. Okay. What clarification? Any sort of tax that is going. I think we should route the questions, if any, to Mr. Norpulat rather than having our own discussions. हम अपने बाद में कर लेंगे. Okay. You know, it's my understanding this is not tax and this is a service charge. In this case, it's eligible. If I can find it, no problem. But in the financing, during the design of the project, maybe government and IFAD agreed that this service charge will be financed by local government, not IFAD. And therefore, we have to check the cost tabs and see what was the agreement and follow that agreement. I will check the cost tabs and we will come back to you on this specific issue. Okay? Yes, sir. You may proceed, sir. Okay, thank you, thank you. Now, few more slides on key principles. We will be asking you to utilize a reliable accounting system so that you can prepare timely project reports and use acceptable accounting standards. Cash-based of accounting standards are not acceptable. We do not accept if you say you're preparing accounting financial statements of the project on a cash basis. But usually all projects in India use Indian accounting standards and it is acceptable. Please make sure you follow local Indian accounting standards to prepare, maintain accounting records and prepare financial reports quarterly and also annual. Internal controls. We will be asking you to have a good internal control environment over the operations. All the supporting documents should be in place. All supporting documents and clearances, approvals, authorization are in place and they are duly followed. And a bank account has a strong control over the payments and a segregation of duties within the finance team to ensure one person does not have a control over all aspects of the transaction processing and payments. All these internal controls, we will be working with you to ensure you have a good system of internal controls. And external auditors, we will be asking you to appoint an auditor, private sector auditor,
And this auditor will be auditing your financial statements on an annual basis using the international auditing standards. And audit report will be due within 6 months of the end of each financial year. In India, your financial year ends on March 31st, and therefore on September 30th, you have to, by September 30th, you have to submit audit reports to IFAD. That's one of the key financial agreement requirements, and we will be following with you to appoint auditors on time, and you have to agree also the terms of reference and other aspects of the appointment of external auditors. You have to agree with IFAD. Few more principles. Transparency. IFAD is committed to transparency, and we will be publishing some documents related to the project, public publishing, and people who has access to internet can get, download and read them. One of them will be audit report. We will be publishing audit reports of the project without management letter. This will make sure that IFAD tries to be open to a society, civil society, and present the results of the projects we are financing, and to get feedback whenever there is a need for feedback from different civil society groups. Disbursement conditions. Financing is made available for withdrawal by the borrower upon entry into force of the financing agreement and after stated withdrawal conditions have been fulfilled. I am sure, I think Bria is starting the project implementation, and you already know what are the disbursement conditions. If you open the financing agreement, just before the page where IFAD representative and Indian government representative signed these agreements, you see the disbursement conditions. You have 3 disbursement conditions. The first one is IFAD no objection to the PIM, project implementation manual. Key project staff as described in the project agreement shall have been recruited. You have to complete the recruitment of all key staff for the project, and subsidiary agreement in the form and substance acceptable to the IFAD been concluded between the state and the lead project agency. I hope you already have met all 3 conditions, and you can start dispersing funds. You can ask IFAD's funds, but as I told, we work on a reimbursement basis. Probably you will be sending withdrawal applications after you spent a specific amount of resources from the state government, and then ask for reimbursement. Have you already started project implementation? Have you spent any funds from state government, or have you received advance from state government? Yeah, hi Norpulat, I'm Nitika Khandelwal, I'm project director. So yeah, we have received the advance from the government, and majority the expenditures which we have done till date is about on the salaries. We have spent around 4 crore rupees. Okay, then if this amount is very small, then probably you will combine the calendar Q2 and calendar Q3 and calendar Q4, which means from July to December you can combine, and in January and February you can then request
reimbursement? And also, do you know your contacts in the Ministry of Finance? CAAA, we call it. Do you know your contacts in the Ministry of Finance where you have to submit your documents for reimbursement? Yeah, we know about that. The team knows. And where is Director of Finance today? Sushi Ashton, the main section. And so we have received roughly around 14 crores from the government. And yes, as you're saying that with the amount which we have spent is very small. By December or January, we will be doing all the arrangements and we'll be sending accordingly the. Okay. I lost the voice. Can you hear me? Can I continue? Yeah. Yes. Oh, okay. Okay. Sorry. Sorry for that. Yeah. It's my understanding the Minister of Finance has a system where you should you should get an access to this system and submit all your documents through this system. The Minister of Finance special system to submit your documents for reimbursement. Whenever you need any help, assistance, please just let me know, and we will help you to prepare all the required documents. And I think Minister of Finance will be a very good a focal point for you to get initial advice and instructions how to submit required documents. But we are also available whenever you need our help and support. Let's continue. We are already 1 hour. Do you want to have a small break or later on? Hello? Yeah. Probably we can continue. We just. Okay, let's then 5 minutes break. No need for a break now. Okay, we'll continue then. Okay, sorry. We have sorry. a problem with the mic. Okay, then we will have a break later on then. Okay. From IFAD's side, we will be asking the governments to use the government systems for the project implementation. If it's possible, we use government's budgeting system, government's treasury system, government's financial reporting systems, controls, internal controls, and other systems and staff of the government for the implementation of the project. Because all international financial institutions prefer to have a sustainable operations within the government, so that they have dedicated staff and systems to implement this kind of projects in the future. And therefore, if possible, we will use government systems, including staff of the government. And I'm sure some your project staff will be seconded by the government to work on this project, including some maybe finance staff. We will encourage this practice, and we think that we by this cooperation, implementing projects together with the government officials, we help the government to set up systems for future projects with IFAD and with other international financial institutions. And IFAD uses its risk management framework. We assess risks associated with projects, assess it initially,
then agree mitigation measures, and monitor the risks around the project during its implementation. And this specific risk framework documents all the changes during its implementation, and we will be assigning, risk level, high, substantial, moderate, low, and depending on the risk level, we will be doing required controls. When we see high risks around a specific maybe operations, we will be asking you to have additional controls to minimize the risks associated with those risky areas. Now, I will be presenting few key areas that you have to focus on during the project implementation. During each supervision, financial management consultant or finance officer, as I told, will join the mission, and we will do assessment of financial management aspects of the project. And the first area will be organization and staffing. We will be asking you a lot of questions about how you recruit staff for FM and for other functions, how you assess their performance, do they have job descriptions, recruitment process are transparent, and do they know IFAD's anti-corruption policy, other IFAD's rules and policies, and do they have required skills and capacity to meet the project objective, project requirements, in IFAD's requirements. We understand in IFAD that hiring and recruiting right people from the beginning will resolve many issues, because without having right people in the right place for the project, project implementation will not be successful. And therefore, to ensure that we have a good results of the project, and to meet the project development objectives, we insist that projects to involve recruit experienced, adequately experienced and educated people for the project. And we will monitor during the project. When we visit, we will ask you a lot of questions about staff experience, CVs, job performance, job descriptions, annual performance review, all these kind of things. And this will help us to keep good stuff for the project. Budgeting, we will be asking you a lot of budgeting questions. As I told, annual work plan and budget, you should submit 60 days before the start of the financial year. Your financial year starts on 1st of April, and therefore 60 days before the April 1st is the end of January. And by the end of January, you should submit annual work plan and budget detailed, and you will get a format of the annual work plan and budget by IFAD. Probably you already submitted one. And it should be submitted by January 30th for the year which will start on April 1st. And therefore, please make all the preparation before, and in this case, you will need to start at least beginning of January, the preparation, and submit 60 days before the start of the relevant year. And this annual work plan and budget should include detailed physical targets you plan to achieve, also financial indicators, how much money you plan to spend during the year. Also,
this annual work plan and project budget will be used during the project implementation to compare the progress. If you plan to spend, for example, 5 million during first quarter, for example, and we will compare this 5 million with the actual spending, for example, 3 million, and we will be asking you why you could not spend the 2 million difference. And therefore, we will be asking you to prepare very good quality budgets and agree with IFAD on a timely, and please monitor the budget execution during the year. And also, you have to ensure that, annual work plans and procurement plans are linked. Usually you prepare first procurement plan, and on the basis of the procurement plan, you prepare annual work plan and budget, because the procurement plan defines when and how much you will be spending financial resources. The next area is the funds flow. You will be sending withdrawal application. As I told, you will be sending your supporting documents to Minister of Finance, and Minister of Finance will be sending withdrawal applications to IFAD. And FCL has all the requirements, and I think it says on a quarterly basis you will be submitting withdrawal applications, and supporting documents will be quarterly financial reports. We call it IFARS, interim financial reports. And IFAD is moving from statement of expenditure system. Before we ask it project to submit a statement of expenditures for each withdrawal application, but we are simplifying this process. And for REAP, FCL says you're not required to submit SOEs. You will be required to send financial reports, quarterly financial reports. And this format is included in the FCL. You have this format, and we can, during this implementation of the project, we can agree the final format of the report, and you will be submitting to IFAD this report on a quarterly basis. Also, you will be attaching this financial report to each withdrawal application you will submit. You will attach the most recent financial report to each withdrawal application you will be submitting. You may, in some cases, you may ask for advance. Most of the Indian projects, they don't ask for advance because they get funds from the state government and then ask for reimbursement. You don't need advance from IFAD. But in some cases, you may need to ask advance. It's possible. You can request advance. If you will be asking for advance, then we will be asking designated account reconciliations. This will show you how much you received from IFAD, the closing balance, and how the advance was used by the project. Also, we need to have a clear rules and procedures on counterpart funds, how you will get state government funds to the project accounts, and how to report and how to record in the financial systems, accounting system, all these transactions. And also we will assess together with your efficiency of the funding channels. In some cases, maybe you have a specific rules and regulations which requires different controls over movement of the funds from project to different implementing partners, and we have to make sure that these channels are efficient. Also, we have a good controls over spending by implementing partners.
No questions? Yeah, hi. Okay. No questions as such, but since you mentioned about the hiring in the last slide about the project staff and everything, so just wanted to update with that. So in our project, we have certain positions which are coming from the government. So those all positions have been occupied and government have deputed people on those positions. And as far as other positions are concerned, so we are hiring through an HR agency, which has also come on board. And we plan to have the complete staff on board in a month's time. So I think, as you mentioned, that it is the most crucial thing that this thing should be done at the first stage of the project. So we hope to complete this in the next month's time. Yeah, thanks, Norpulat. You can continue and we can have questions at the end. Okay, okay, yeah, I remember you are using HR agency to recruit for you project staff. Yes, we, as I told you, we prefer government staff to work on our projects, but when there is a need and when there is a shortage of the government staff to work on our projects, you will recruit them and you have to follow transparent recruitment processes. In this case, I think you are using services of the recruitment agency to get all staff on board quickly. I think it is in line our rules and procedures, but please check with procurement, so that you follow the rules, because you will be paying to recruitment agency a fee, and this fee should be based on signed contracts. Sign it, and contracts must be signed following procurement rules of IFAD. Yes, yes, noted. Okay, good, good. Accounting system, we will be also checking the accounting system. As I mentioned before, IFAD Handbook for Financial Reporting and Auditing of IFAD funded projects is the key document, and we will be providing you a copy of this document so that you get all finance people familiar with this provisions of this document. Key areas we will be focusing on: accounting principles. As I told, in your case, Indian accounting standards is acceptable to IFAD, and you don't have to apply IPSAS or IFRS standards. And I'm sure accountants of your projects know how to apply the national accounting standards. And adequacy of the accounting system and software. I think most of the projects in India use Tally software, and they have, I think, a good customized versions of this software for IFAD funded projects. But you will check. I think they have also web-based versions of it, and you can use this web-based systems by different districts and implementing partners. You can give them access and enter data directly to the accounting software, and you should have a adequate chart of accounts. Workflow should be clear. We should have a policy and procedures on workflow. Who should generate the transaction? Who should check initially and final approval, and different levels of access to the system and workflow procedures should be in place. Timer recording. We want you to keep accounting records entered into the system timely. Within 1 week or so. So that up-to-date information available all the time. All sorts of project funds must be captured in the accounting system, including contribute funds,
And also you have to have a system to record beneficiary contributions of the other implementing partners, convergence funds. All of them should be recorded in the accounting system. All accounting records should be complete, accurate, useful for you and for us, and timely prepared. As I told, IFRS formats included in the FMFCL, but if will be a need, we can walk in and revise this format to meet your needs. Please check again. It is documents that can be revised, adjusted in line with your needs, and then we can work out the final version during the next few months. Internal controls. So just, Yes, please. I don't know what you accounting software and the accounting methods we will be using the same which we were using in the last project of IFAD. Okay, Tally, yeah. Yeah, Tally, yes. Okay, good. We had a very good system for this the previous project, and finance team was very experienced, and they maintain it very reliable accounting system using Tally. No problem. You can continue the same provider, and if there is a need to pay for customization of maybe support, please sign the contract. Again, please follow the procurement rules, consult with the IFAD's procurement team, and sign necessary additional agreements for customization and maybe support during maintenance and support during the project implementation. Good. Okay, now internal controls. I think you have already PIM. It should be duly communicated, and all rules and procedures should be followed during the implementation. Segregation of duties is important. One person should not be responsible for all different levels of approval and clearance. Segregate between different individuals. Over expenditures, we would like to have a very good control, reliable control. All invoices and vouchers should be approved by different levels of people, starting from district level approval, then at the PMU level before payments are processed. Controls over cash. Cash is very risky operation. We will ask you to minimize the use of the cash. If you need to use the cash, please have a very strong controls over distribution of the cash. Contract management and filing. You have to use the IFAD's contract management system and have contracts registered in the system for us to monitor also active contracts. Compliance with financing agreement and other official documents. Eligibility, I already mentioned. It's important, all purchases are eligible for project financing. In internal audit, we will be having with you internal auditor sign it contract with you, and so that they conduct internal audits every 6 months to check the controls and recommend for the improvements. External audit, we will be asking you to appoint an auditor and submit audit reports by September 30th for financial year ended on March 31st. And therefore, your first audit will be, I think, for financial year 22-23. But if you want to combine, you can combine up to 18 months. If your project started, for example, after September 30th, if your project started, for example, active project
implementation started after the 1st of October 2022, then you can combine 6 months of this financial year, which means from October to December and from January to March, 6 months, combined with the audit of the 23-24. But if you started already and you have expenditures in September or August this year, then you have to have a separate audit for this 22-23 and submit an audit report by September 30th of 2023. This is as a requirement of the IFAD, and we have to agree terms of reference. Please contact me and I will give you a standard template for the audit terms of reference. And you have to appoint auditor before the start of the audit, the financial year to be audited. And therefore, if your financial year starts from 1st of April, please try to appoint the auditor around, the April, so that, they have enough time to prepare the audit and then complete the audit in a timely manner. You have to submit unaudited financial statements by within 4 months at the end of the financial year. Your financial year ends on March 31st, which means your unaudited financial statements will be due by April, May, June, July, by the end of July. By the end of July, April, May, June, July. By the end of July, you should submit to IFAD unaudited financial statements, annual financial statements for the previous year. An audit report should include management letter recommendations and your response to the management letter recommendations. And also, we'll be asking you to implement management letter recommendations as soon as possible. We will follow up with you on the weaknesses reported in the management letter. In the final one, audit opinion, we want a clean audit opinion because qualified or disclaimer opinions will not be acceptable. They can be acceptable only very, very exceptional circumstances, but we expect that clean audit opinions will be issued on our project financial statements. I have a question here. Please. Yeah, so our project loan agreement signed in June 2022. And the expenditures which we have, though the expenditures are very less till date. So do we have to submit how do we then have to submit the external audit for financial year 22-23? From which month to which month? Did you had expenditures in August, September this year? Of salaries only. Okay, salaries. Only you had salaries. expenditures. Okay, then you had expenditures, which means you have to prepare audit report for the first year. Because if you did not do expenditures in August and September, and your expenditures started, for example, from October 1st, then IFAD allows you to combine 18 months, up to 18 months, which means you could combine 22-23, 6 months of 22-23, and plus 23-24, which starts from April 23, and combine these audit reports, and we would not ask for you from you to submit the audit report for this year, but you had already expenditures, and we cannot combine the audit periods more than 18 months, and therefore the audit report for financial year 22-23, which will be covering from June 22 until the end of March 23, an auditor should audit this period, and you should submit this audit report by the end of September 2023. Is it clear? Hello.
But that's, so what I could understand that for 22-23, since we have started our expenditures from, we have done it in July, August and September. So we will have to hire an external auditor. So Yes. should we hire an auditor now? That's what you suggest? Yes, please. Yeah, as soon as possible, because we want you have an auditor in place during the audit year period. And please, send an email to me. I will send you a sample auditor. We will prepare final terms of reference for the audit, and you will consult with the procurement to select the auditor. Okay, just a second. I'll just discuss internally with my team. Nathani जी, हम लोगों ने अभी एक तो इंटरनल ऑडिट के लिए फ्लोट किया था और एक्सटर्नल ऑडिट के लिए अभी हमने कुछ किया है फ्लोट? अभी मैंने अभी नोटिस पे डालना नोटिस पे डाला है, डाल दिया है? नहीं डाला। Hello? Yeah, no, yeah, just a second. One confusion we just wanted to clear. It's January. अच्छा ठीक है. Okay, okay. मार्च 22 तक Next year में yes. अब मुझे भी सही क्वेश्चन है, तो मुझे नॉट प्लस क्लियर करना है कि एक्सटर्नल ऑडिट के लिए अभी हमने नोटिस पे डाला था कुछ आया या बिकॉज़ ही सेइंग ओके सो नॉट प्लस आई जस्ट clarify one thing as per the finance team basically the loan agreement was signed in June 2022. We have been doing the expenditures from January from the retroactive financing. And so basically our time period for expenditures would be January 2022 to March 2023, which will be 15 months. So we'll get the external audit done of this 15 months. And as you said that we will be submitting the report in the next year, 2023, by September 2023, we'll do that. And as far as the terms of reference and for the external auditor, as you said, we will be sending you mail and we'll also upload on the notice to take the due approval. We'll do that. Thank you. Okay, good. You're right. You're right. We included in the financing agreement retroactive financing, and retroactive financing starting from August 21, I think. You are allowed to spend funds, and therefore, if you are paying salaries starting from January 22, it is eligible, and this should be included in the audit report. And audit should cover 15 months from January 1st, 22 until the end of March 23, 15 months. That's correct. Yes, thank you. Good. Okay. Now, disbursements from the date of the entry into force until the closing date, you can submit withdrawal applications. But the completion date very important, and closing date is also important. You have to complete all your project activities by project completion date, but you can submit until closing date withdrawal applications for the expenditures incurred until project completion. That we'll be discussing also during the implementation, but it's not urgent for now. But you should understand this closing and completion date requirements of IFA. As I told, reimbursement will be key method for withdrawal applications. Also, advances and replenishment is also possible, and direct payments also possible. If you will need, we can agree, other disbursement modalities during the implementation of the project. But I think Minister of Finance of India wants to use the reimbursement method, and we will follow as a primary disbursement method, the reimbursement method. Expenditure categories and disbursement. I just interrupted. Okay. I have one question again, because I missed the initial part. So, as you mentioned that withdrawal applications will send for the retroactive financing and everything, just wanted to discuss something conditions precedent to withdrawal.
So subsidiary agreement is one. So Please, not- I did not get your question, please. Conditions precedent to withdraw. Conditions, Conditions yeah, precedent. yes, Yes, I just wanted a detailed idea on what are those conditions of precedent to withdraw. Okay. This is, can you see my screen? Yeah, I can, yes. Yeah, the last part, ABC, I just extracted from the financing agreement. And this financing agreement says the withdrawal conditions is IFAD's no objection to the PIM. I think you have already IFAD's no objection to the PIM. If not, you can talk to Mira, and Mira can provide no objection to the PIM. Key project staff has been recruited. I think you have already recruited all the staff, and subsidiary agreement between the state nodal department and lead project agency are signed. I think this subsidiary agreement also should be signed. If not signed, you should work with Mira and her team to sign this subsidiary agreement. Norpulat, if I may, this is Mira. So just a bit of clarification on this. So the project has already revised the PIM and will upload it next week. We fielded a small support mission prior to the startup so that we can help them making those revisions. The second thing on subsidiary agreement, we have already no objected to their subsidiary agreement. The third thing is on key project staff. Now, as described in the document, in the financing agreement, there are a couple of positions like PD and CPD and finance director, etc., who are on board. But some of the positions were going to be hired through an HR agency. And what the project has done is they have hired some of these, people from the previous project as consultants handling these positions. And one position is entirely new, like climate and environment specialist. So how do we address that? Because HR agency, it has taken already a long time to get the HR agency on board. And the management consulting firm procurement was declared invalid, and they are going for a rebid. We don't want them to slow down the process. So can they show that they have hired consultant for, let's say, some one or two key positions, and then also explain that HR agency is currently preparing the list of experts for climate, because these are all key positions. Can they say that and then submit, get the permission to submit withdrawal application, or is it an absolute non-negotiable to have all those people in position? No, Mira, the key project staff means a project director, finance manager, procurement, chief procurement officer, and the project key coordinators. We don't, we don't require to complete recruitment. If they confirm they have key staff like project director, finance manager, and procurement officer, then it can be considered as a key project staff, and you can issue an objection for first withdrawal. Design Norpulat, in the financing agreement of the project, we have listed out key professionals and key staff, and we have also put the climate as one of the key staff. Then in this case, we have to meet these conditions. If we have this definition of the key project staff, then they should confirm they recruited, or they have a in place Yes. the procedures to get on board the key staff on time. So if they can, because what they have been wanting to do is to submit the withdrawal application, and they have met the two critical ones, the PIM and the subsidiary agreement, which usually take much longer. And they have the PD, CPD, finance manager.
The only thing is that for procurement in the design of the document, this was to be procured through an HR agency, but they have someone in place currently, more as a consultant. For climate, the process is ongoing. Can they explain this and then ask for permission to submit a withdrawal application in the interim? Of course, yeah, we can, no problem, yeah. Thank you. Okay. Thanks. Yeah, now, last few slides, disbursements, we already, we did expenditure categories and disbursement percentages. I will be presenting this schedule 2, we call it. It's also extract from the financing agreement. This we have to follow during the implementation. Up to 30% overspending is allowed, but if the spending will be more than 30% in any category, then we have to revise this schedule 2. But up to 30% the variance is allowed. And then, if you pay attention, the percentage eligible for IFAD financing says 100%, but in the financing agreement, we have the definition of the 100%. The percentage is applied to project expenditures, excluding taxes and shares of other financiers. Therefore, during the project implementation, your project FM staff should understand the cost tabs of the RIA, and we will be financing 100% after you deduct taxes and share of the other financiers. For example, you have 100,000 rupees invoice, and out of this 100,000, maybe 20,000 taxes. Then you will deduct 20,000 from 100,000, 80,000. Then you may have also a requirement that another 10% will be financed by beneficiaries. In this case, 10% of the 80,000, 8,000 will be beneficiary contributions, and out of this 100,000 invoice, 100,000 rupee invoice, 72,000 will be charged to IFAD. This, in order to correctly apply percentages, your finance staff should understand the cost tables very well. For each cost category, for each component and subcomponent, please understand the percentages, the share of each financer, government's share, IFAD's share, and all other financiers, and apply correctly. We will be monitoring the correct application of the percentages during the supervisions, and also when we desk review financial reports. Any questions? Yeah, we completely understand the contribution categorization here. No question. Okay, good. You will have in-kind contributions. We will work together with you also for accounting of in-kind contribution of beneficiaries. We have to prepare methodology, how we will measure, assess the value of the in-kind contributions of the beneficiaries, and labor cost or materials should be based on the actual cost in the state, in your project area. And we have to have proper supporting documents for each and every beneficiary in-kind contributions. And auditors will be also auditing randomly selected few items for in-kind contributions during the annual audit. And also, I will be working with you closely to ensure that we have a good methodology, and also we apply in practice the good this agreed methodology to assess and report in-kind contributions.
And this is in brief the key principles, and we will have maybe 10 minutes break, and then I will be presenting slides on financial reporting, report-based disbursements, and also accounting and auditing reporting requirements of IFAD. So before we take the break, just one question of that. We wanted to know, like, the committed loan amount for the project is $105 million. Now, what is that cutoff date from which we calculate the currency exchange rate? Like, we signed the agreement on 2nd of June. So will that be our cutoff date for calculating the loan amount into our local currency unit? Yes, probably. Did you have planned exchange rate during the design? You have to check the cost tables. Maybe they have planned exchange rates. Yeah, I think that. Okay. If not, 73.5 was the exchange rate during this design, which was taken into account while preparing the cost tables. yeah, that will But then the loan agreements. Yeah, please go ahead. Yeah. Okay. If you want to compare a local cost with the local actual expenditures, probably will be better if you use the planned design stage exchange rates. But if you wish to have a better up-to-date picture of the future spending, you can use the date of the financing agreement, because it will be, the reporting will be done in US dollars for comparison purposes, because you will be receiving from IFAD $105 million, irrespective of the exchange rate on the ground. And therefore, when you will be submitting to IFAD, for example, you spend 79 million Indian rupees, and Minister of Finance submits using the existing current exchange rate of the Indian rupee to US dollars, which is about 79, I think, and then ask from IFAD to withdraw application $1 million. And therefore, IFAD will be sending to you 105 million at the exchange rate, which is, in practice during the project implementation. Therefore, I think it would be better if you use the July or June 22 exchange rates to convert to Indian rupees, 105 million, and then compare actual USD expenditures and divide your actual rupee expenditures using the actual exchange rates for this comparison purposes. But during the project implementation, you may want to compare what you planned in Indian rupees during the design stage and what is the actual Indian rupee expenditure actual during the implementation. For this one, if you want to do this one, you may want to use the design stage planned exchange rates. But design exchange rates definitely would not be prevalent during the actual expenditure stage. So there will always be a difference. So what I could understand from what you said, that when we are doing the reporting, so we would be doing all the reporting in the US dollars. And while we are making our reports, we would be reporting our expenditures, which probably would have been done in the last few months of before reporting.
those expenditures will be reported in the actual exchange rates prevalent during that time. Yes. Am I right on this, Norpulat? Yeah, that's correct. Yeah, you will be using the actual exchange rates to convert Indian Yes. rupee expenditures into US dollars. Yes. Okay, okay. And then we will be reporting subsequently. And as far as you just said that when we have to see, we have to make our expenditure plan or maybe, you know, our procurement, then we can actually take the design stage exchange rate. That's what I could understand. Yeah. Yes. Okay. Yes. Thank you. Thank you. So yeah, we can, if you want to take a break, we can take a break. Yeah. During the next 45 minutes, I will be presenting key financial management requirements in terms of the disbursements and reporting, also auditing. Let me share with you my screen, and then can you see my screen? Yes. Okay. Yes. Okay. Now, report-based disbursements. Some of you may remember, if you used to work for IFAD projects before, we requested statement of expenditures, a detailed forms, form 101, 102, 103, different kind of forms for each category of expenditures for each withdrawal application. And it created a lot of work for projects. Also took time, resources. Now, IFAD decided that we have to simplify the disbursement process. And from July 2022, we introduced report-based disbursements for all projects around the world. Not only Indian projects, not only APR, Asia Pacific region, but all other regions also introduced report-based disbursements. Which means projects are not required to submit to IFAD a detailed statement of expenditures for each cost category and for each withdrawal application. We believe and hope that this will make the disbursement process much simpler. And the report-based disbursements, we will be asking from you to attach only the most recent financial reports to withdrawal applications. And as you prepare to submit the first withdrawal application, you have to have the most recent financial reports for the project to attach to the withdrawal application. And if you would like to submit, for example, in October or in November, I would recommend you to prepare financial reports for the quarter ended on September 30th. So the most recent report, which is due by November 15th, and we can prepare. You can prepare this report, submit to me the draft version, and we agree the final version, and then you can attach this one to submit withdrawal application. And we will, in this my presentation, I will try to explain to you the key aspects of the report-based disbursements. As in my previous presentation, I mentioned financial management and financial control letter, but it used to be
letter to the borrower, LTB, before, and this name is also changed from this year, financial management and financial control letter. It is the same letter to the borrower. There's two names of the same document. And IFAD introduced report-based disbursements and amended the letter to the borrowers for all projects that will be completing after the end of this year. And we also agreed new financial report formats. And in your FMFCL, we attached the most recent format of the financial reports, and you have to follow that format. As I mentioned in my previous presentation, we may agree to change it, but please check the format. If you think the format should be amended, revise it, we can agree revised version, no problem. But you know, this amendment should meet your needs for the financial reports and for decision making. As I mentioned, IFAD will not accept your withdrawal applications without the most recent IFARS, quarterly financial reports. And therefore, please prepare financial reports, the most recent one, and attach the most recent one to each withdrawal application. Key changes, what kind of changes we are introducing? Before, projects had the option not to submit, had to submit financial reports quarterly or semi-annually, but we are now requiring all projects should submit quarterly financial reports. And this is requirement, and this is also included in the revisions to FMFCL or letter to the borrowers. All projects should submit withdrawal applications supported by the interim financial reports. And SOEs are not normally required. In some cases, for high-risk projects, we may request statement of expenditures, but it's not required from all projects. And from you, Rehab is a substantial project, risk project, but we are not expecting that we'll be asking you to submit a statement of expenditures. We have a good record of the previous project, and we did not have serious issues with financial reporting, and therefore we don't expect that we would ask you to submit a statement of expenditures. And from you, will not be asking the reimbursement, the 6 months cash flow, but for all projects who uses the cash advances, we will be asking cash forecasts. From you, we will not be asking cash forecasts, but for any reason you decide to ask advance from IFAD, not reimbursement, but advance, then we will be asking from you a different form of the financial reports, and also we will be asking you to submit as cash forecasts. That will be a requirement. And cash forecast should be adjusted for accruals. You may forecast some accrual with expenditures, and cash may be related to the different quarters or different even financial years, and you have to adjust for that. And IFRS should be submitted as an attachment supporting document to the withdrawal application. Now, expected benefits. What kind of benefits we expect? Reduce the volume of supporting documentation, because if you remember, if there are people among you who used to work for the IFAD funded projects,
preparation of the statement of expenditure were very time consuming, a lot of resources needed, and we had to request even, with small expenditures, sometimes, few $100 expenditures also included as a separate line. And you had to fill in for each and every transaction, the contract data, also payment data, different other things. But we will not be asking anymore this kind of details. The financial reports will be sufficient from you to justify your expenditures. We also expect that projects will apply better planning policies because for projects who uses advances, we will be asking cash forecasts, and cash forecasts withdrawal application amount will be based on cash forecasts. You will be requesting from IFAD funds that you plan to spend during the next quarter. Timely availability of funds, based on your cash forecasts, we can provide you cash advances, and it will resolve the shortage of funds in many projects. Systematic monitoring, we ensure that quarterly financial reports will help us to understand the project better and monitor implementation better, and improve the financial management skills because by quarterly preparing financial reports and practicing good cash forecasting tools, project staff will be experienced in advanced techniques of financial management. IFRS content, I think for your project already agreed. FMFCL has already, but we can revise, we can amend, and we can agree, and we can amend during the implementation. Maybe 1 year, 2 years time, you want to have a specific maybe information included in the report, and we can agree revised formats and apply the formats that best meets your needs and IFAD's needs. Please go ahead. If I may interrupt. We haven't received the LTV yet. We haven't received the signed LTV yet. You don't have it? No, we got a draft LTV, but when we had dropped the mail in September first week mentioning that we wanted a signed letter to borrower. So the reply which we got from Sriramji that the LTV and there are some changes in the financial procedures and everything that will be communicated at the end of September. So we are still awaiting. Okay. Then I remember I sent to Shriram the latest. We call it FMFCL now, not the letter to the borrower. The new name is Financial Control and Financial Management and Financial Control Letter. And I will follow up with Shriram because I thought he signed this FMFCL and distributed to the project team. Let me follow up with him. I'll just see when we dropped a mail. I'll just use the same terminology. When we dropped a mail to Sriramji, he basically replied us back saying that as per the revised policy, procurement arrangement letter (PAL) will be separately issued starting from end September 2022 for all the new and current projects. For the time being, the thresholds, Yeah, I think he's talking about the procurement letter, not financial management.
We have now two, we used to have in LTB, we used to have all financial management and procurement procedures, but now we have separated them. We have now a separate letter for financial management and separate letter for the procurement. I think he's talking about the procurement letter, but it seems I saw the signed FMFCL for RIA. I will check with Sriram, and I will forward to you as soon as I get a copy from him. Sure. Thank you. Thank you so much. Okay, I will follow up. Withdrawal amount, in your case, it will be very easiest option because the reimbursement, how much you have spent, you will be asking a reimbursement of the actual spent amount. Each quarter, you will report the actual spending, and then you will be asking IFAD to reimburse the actual spent amount. But if you will be using advance, then it will be a little bit complicated, and justification of the actual spend. And then other one, the second withdrawal application will be for advance for the next quarter. Your planned expenditures for the next quarter will be advanced to you. That is the plan and the procedure, but I think you will not be required to submit two different withdrawal applications because the reimbursement method will be used under your project. Supporting documents, we will be asking the contract management system information as well. You are already, I think, using the contract management tool for the procurement purposes. And on the basis of this one, we will be checking your cash forecasts, your spending plans. And also, this contract management system information will be used to verify your cash forecasts and withdrawal applications, in case you will be using the advance option. IFAR submitted, financial report submitted to IFAD should be certified by project management, in this case, project director, and sign it. We will be treating this financial reports as a supporting documents and should be properly signed and authorized before submitting to IFAD. That's in brief how the withdrawal application process will work under your project, and I will follow up FMFCL with Sriram, and then you can send me if you have any questions about the FMFCL, format of the financial reports, and frequency and other requirements of the FMFCL. You can contact me, and I will help you to understand the document and also meet the requirements of the document in a timely manner. Any questions? Not really. Yeah. Thank you. Okay. Now, as I told you, we will be also, I will be sending to you also IFAD Financial Reporting Auditing Requirements Handbook. It includes key financial reporting and auditing requirements for our projects. It's also one of the key documents of IFAD. And your finance staff should know the requirements of this handbook. In this presentation, I will be briefly introducing you to requirements of the financial reporting and auditing requirements. As I mentioned, primary responsibility for FM is a borrower. It is included in the
agreement of the establishing IFAD. And also, I think general conditions also make reference to this responsibility. IFAD has a fiduciary responsibility to ensure the funds are used for intended purposes with due attention to economy efficiency and social equity. As I mentioned, we are responsible for assessing the risk environment around the project, monitoring use of funds, and implementation support and supervision mission. We conduct implementation support and supervision missions to help you understand better IFAD's requirements and meet them. As I mentioned, IFAD accepts IFSAS financial standards, accounting standards. IFSAS is public sector accounting standards, international public sector accounting standards. IFRS also accepted. It is for mainly commercial entities. International financial reporting standards. It's very complicated, and usually our projects do not have very complex financial operations, and therefore we don't ask them to comply with the IFRS requirements. Also, IFSAS cash also acceptable, and national accounting standards also acceptable if accepted by IFAD. For Indian accounting standards, we did a review and analysis, and we believe national accounting standards in India are close to the international standards, international accounting standards. Therefore, they are acceptable. During the preparation of the financial transactions and reports, you have to follow Indian accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India. They issued national Indian accounting standards, and you have to make sure you apply all standards applicable under those standards. We encourage you to select standards that are most appropriate. In this case, I believe in India, national accounting standards are good enough, and you have good trained staff to apply them, and therefore we encourage you to use national accounting standards. Now, when you prepare financial statements, what kind of financial reports we will be asking from you? Most projects will be cash basis national standards, modified cash-based national standards. In this case, we will be asking you statement of cash receipts and payments, notes to the financial statements, comparison of budget and accrual, budget and actual amounts. This kind of reports will be mandatory. Also, if you will be using accrual base of accounting, in this case, we will be asking statement of financial position or balance sheet will be requirement. Statement of financial performance and profit and loss, income statement will be required. Statement of change in net assets and equity will be required. Cash flow statement also will be required. This, if you apply accrual based of accounting system. But in addition, if at specific requirements we have also, we ask you fixed assets register attached to the financial statements as an annex,
Withdrawal application SOE statements should be also included. Source and use of funds statement also should be included in the financial reports. This is, this requirement, table 2, minimum content of the financial statements is included in this handbook I mentioned earlier. Please understand these requirements, and when you will prepare financial statements, annual financial statements for the audit purposes, we have to agree the content of the financial statements. Please consult with us what reports you would include in the annual financial statements, and then after agreement with IFAD, you would submit the final annual financial statements to auditors for the audit. And this, we will not be asking very complex reports, but very simple reports that demonstrate how much you received cash from state government, from IFAD, from other sources, and how much you spent in the closing balance. A simple accounting reports will be enough for us to understand the project. As I mentioned earlier, unaudited financial statements annually will be required within 4 months from the end of the financial year. In your case, will be end of July. Please submit by the end of July for the previous year unaudited financial statements. And by the end of September for each year, audited financial statements, including management letter. In-kind contributions, I also mentioned, we have to make sure in-kind contributions are included in financial statements, and disclosure in the financial statements is provided for all in-kind contributions. We have to understand in the disclosure to the financial statements as the nature, amounts, and methodology of the in-kind contributions reported. I also already mentioned if IFARS in detail, and I don't want to continue, spend time on this one. And now auditing standards. Your projects will be audited by private sector auditors, and therefore private sector auditors should apply international standards on auditing or national regional standards acceptable to IFAD. Most of your private sector auditors apply international standards on auditing, and but also most of them also, I think in India, they apply national auditing standards issued by Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India. Therefore, national audit standards also acceptable. And both of them, during the audit, you can agree which standards they will apply. In terms of reference, in contracts should specifically mention the audit standards as the private sector auditors will be using. When a private sector auditor, you have to select a private sector auditor. Again, you have to follow IFAD's procurement requirements and rules, and select auditor. But before the selection, as I mentioned, you have to agree terms of reference with auditors, with IFAD,
And auditors must be appointed in advance of the start of the period to be audited. And therefore, for example, if you want appoint auditor for 23-24, should be appointed by the start of the financial year. It is the best practice. Many projects cannot do it. Usually they appoint close to the end of the financial year, even after the end of the financial year. But we encourage you to practice the appointing auditors in advance. So that, auditors can do a proper assessment of the project's internal control environment, financial reporting, and other aspects of the financial auditing. The process of appointing the auditor, first of all, terms of preference. You have to agree with IFAD in due time to allow appointment of auditors by the start of the financial year to be audited. Okay. Also, IFAD should issue no objection to the terms of preference. Final version. Yeah. Then you have to follow the procurement rules and select the audit company. You should also inform IFAD about the proposed auditor and the procurement process to be followed. And then appoint auditor. You have to sign a contract. Formal engagement letter you should also issue. And then you have to comply with the relevant sections of the contract to complete the audit process. Grants, you don't have grants, you can ignore this one. About the auditors, you will appoint first-year auditor, and this auditor can stay for about 4 years maximum. From the 5th year, you have to appoint a new auditor. And each year, you have to assess the performance of the auditor, and it should be acceptable, satisfactory. And then you can extend the same auditor for the audit of the following year, but maximum of 4 years. When we have a rural finance facility, I think we will have a rural finance facility under RIA. We will have additional requirements for audit. Auditors will test sample disbursements made to different beneficiaries on the rural finance facility, and forms the revolving funds management because the return repayment of the loans and interest should be accumulated in a special account. Call it the revolving fund, and should be monitored closely by project. And auditors should confirm that agreement between IFAD and the project duly followed during the implementation of the rural finance component. Auditing requirements, as I mentioned, audit package should include audit report, audited financial statements, and management letter. Also, we expect unqualified, which means clean audit opinion, will be issued. Qualified, adverse opinions are not usually acceptable because they indicate serious issues with the financial reporting.
and disclaimer of opinion also. We, on a very, very exceptional cases, we can accept qualified or adverse opinions, but we should have a very, very compelling justification for those. Usually, projects in India get unqualified audit opinion, clean audit opinion, which are acceptable to us. And I hope and I'm confident that you will also have the clean audit reports on your financial statements. As I told, within 6 months, you should submit, which means by the end of September, we expect audit reports. If you do not submit within 180 days, IFAD may suspend the disbursements. It's very, very serious violation of the financing agreement conditions, and therefore IFAD may decide to suspend disbursements. It's very unusual, very measure IFAD undertakes, but if the audit is due more than 180 days, then we can you can expect IFAD's reaction as a suspension. That's in brief about financial reporting, audit standards, and also report-based disbursements. Please let me know, do you have any questions? It says the end of my presentation, and please let me know your questions. Yeah, thanks, Norpulat. I think this was a very, very comprehensive presentation, and each of the details have been so well explained by you. And as far as our finance team is concerned, most of them, since we have some consultants who have worked in the previous project, so most of them are also well versed with the requirements, except the few changes which you have just mentioned. So we have all noted those changes, and we look forward for your support and cooperation in future as well, because finance is something which is a very critical field, and sometimes it's important that whatever reporting happens, it happens in exactly the same formats and the due procedures are followed. So going forward, we will be in constant touch with you, and we would be looking forward for same sort of a knowledge sharing and same sort of a support from your side. This is all what I have to say as project director. I just asked my finance team if they have any queries or questions. I think. So thank you so much, Norpulat. It was a very engaging session and very comprehensive. Like all the details have been given. So we will be adhering to all the details which we've mentioned, and would be in touch with you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. I'm available anytime. Just you can drop me an email asking any questions anytime, and I will be happy to help you. And we have consultants based in India. They can help you in local languages, in Hindu also. But anytime we are ready, don't hesitate to contact us. Always ask questions, and whenever you feel that you need our help, feel free to contact us. Thank you. Thank you very much. One thing, one thing, just again, I would ask, as we would be hiring auditors, and as you mentioned that once we decide the terms of reference, so we would be uploading on notice, and I'm assuming that you will get the access to the same document, or do we have to separately mail you? I did not get the exact questions. In terms of reference for audit, yes? So say suppose going forward, we would be hiring auditors, and when we hire auditors, we make an EOI and an RFP for hiring them, which mentions the terms of reference. And before giving up giving an advertisement, we take IFAD's approval through notice. So I wanted to know that once we decide on those terms of reference and we make our document, RFP document for hiring,
So when we upload a notice, do you also get to see that and reply to that, or do we have to separately drop a mail to you regarding getting your view on the terms of reference of auditors? Please send me terms of reference to me directly. We agree the terms of reference final version, and then you will include this terms of reference in the RFP or other procurement documents, and then you will use the notice procurement system to download. Okay. Okay. Thank you so much. That's all clear here. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Okay, all the best. Have a good day. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Bye. Thanks. तो आई थिंक अब हमारी ये 5 दिन की वर्कशॉप का आज ये अंतिम जो सेशन था आज खत्म हो गया। इसके बाद आप लोग सभी अपने अपने जनपदों को मूव करेंगे और लोग सब अपने अपने ऑफिस में रहेंगे। एंड पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट आई वांट टू थैंक बोथ यूजीवीएस एंड यूएसआरएलएम टीम्स टू बी ऑन बोर्ड। काफी एंगेजिंग रहे सेशंस। बिफोर आई गिव माय फाइनल कमेंट्स, किसी का कुछ कमेंट है? पहली चीज, ये स्टार्टअप वर्कशॉप क्योंकि प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो इतनी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप 5 दिन की रखी गई है वो एज अ स्टार्टअप वर्कशॉप ही है। सो ये मत सोचिए कि ऐसा दोबारा बुलाएंगे और इतने 5 दिन हमारे जाएंगे, बट इट इज मेनली टू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड हर एक एस्पेक्ट पे आप लोगों को ओरिएंट करना और एंगेज करना बहुत जरूरी था। देर आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे सेशंस ऐसे थे जो हो सकता है उपासक से रेलेवेंट ना हो, बट यूएसआरएम से रेलेवेंट ना हो, बट हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए सब चीज में इंक्लूड किया बिकॉज बहुत जरूरी है कि आपके और मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट की सेम हो, सब कुछ ठीक, मतलब एक सबको एक अंडरस्टैंडिंग में रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है और हम लूज आउट कर जाते हैं और फिर हम उस बेसिस पे डिपेंडेंट रहते हैं कि अच्छा दूसरा जो हमें समझाएगा ये इंटरप्रेट करेगा, हम उसको समझ लेंगे। सो इट्स बेटर कि हमारी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा एक आइडिया था कि डीएमएम्स और डीपीएम्स सब लोग रहें। उससे पहले मतलब किसी के इसमें कुछ और कमेंट्स हैं, किसी के कुछ फर्दर कुछ सजेशंस हैं, और इसके बाद जो वर्कशॉप्स होंगी वो मेनली डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये रहेगा कि क्योंकि अब हमारे पास एक बहुत अच्छी सुविधा है वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट होने की और बहुत इजीली कनेक्ट होने की, तो जैसे कि अब हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो हमारा ट्रेनिंग मटेरियल भी बनेगा, तो वी वुड वांट कि वर्चुअली हम लोग आप लोगों को भी जोड़ें सो दैट आप लोगों के भी सजेशंस उन सब चीजों में हो। कुछ पीएमयू से हम चीजें डिसाइड कर रहे हो क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आप सभी ने फील्ड पे करना है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग हमेशा से रहता है कि जब हम स्टेट पे बैठे हुए डिसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत बार जब मैं भी इससे पहले डिस्ट्रिक्ट में थी तो यही होता था कि स्टेट वाले तो कुछ सोच के बनाते थे, ये तो सोचते नहीं कि डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, बट हमने देखा है कि ड्यू प्रोसेस में चाहे स्टेट भी हो वो कंसल्टेशन करता ही था, चाहे जब हम सीडीओ थे। गोइंग फॉरवर्ड यही हम लोगों का भी अप्रोच रहेगा कि हम लोग कंसल्टेटिव मोड में रहेंगे, ठीक है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि इसका सजेशन मानने जा रहे हैं, जस्ट दैट इट्स अबाउट अ कंसल्टेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग ताकि बेस्ट चीज बाहर आए। तो ट्रेनिंग मटेरियल के लिए भी जैसे हो गया कि हमें किस मोड ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल में जाना चाहिए, हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक यूज करना चाहिए, कुछ हमें प्रिंटेड मटेरियल यूज करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए, किसी कोई अच्छा, आई एम श्योर सबके अपने अपने टैलेंट्स हैं। जैसे मैंने अभी, क्योंकि मेरा आप लोगों से पहली बार एक इंटरेक्शन हुआ तो आई कुड सी कि यूएसआरएलएम की टीम में हमारे एपीजीज या डीएमएम्स दे हैव अ सर्टेन एज ऑन सर्टेन थिंग्स, डीपीएम्स की किसी की कोई अच्छी क्वालिटीज है, स्किल्स हैं, तो आई वुड वांट कि सबकी वो स्किल्स का निचोड़ हमारे पास यहाँ आना चाहिए और हम अच्छी चीजें डेवलप करें और ऐसे करें कि बिकॉज मेरा अपना सोचना है कि जैसे मैं आज प्रोजेक्ट में नहीं हूँ तो मुझे किसी ने बताया कि आईएलएसपी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया या फिलहाल उन्होंने अच्छा काम किया, नॉट जस्ट एन अधिकारी, इट कैन बी एनीवन, तो वो चीज याद रहती है। जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर कपिल जी मुझे कोई अच्छा सजेशन देंगे माय ट्रेनिंग मटेरियल और वो हेल्प करेंगे तो वो याद रहेगा कि अच्छा कि तो उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने ये चीज डेवलप करी, तो हमारे जो क्रिएटिव एस्पेक्ट हैं वो भी इस चीज में बाहर आ सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा दें। आई एग्री कि फील्ड पे बहुत सारे काम होते हैं, आई
टोटली अग्री, मतलब मैं तो देहरादून में रही हूँ तो मुझे तो पता ही है कि अपने कोर काम से ज्यादा हम लोग बहुत सारे साइड वर्क्स में लग जाते हैं, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप, मतलब टाइम हम सब निकालना चाहें तो सब निकल जाता है, जब अगर हम सोच लें कि हमें करना है ये चीज तो निकल जाता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग कंसंट्रेशन में रहेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड विपिन, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि टीम्स पे हम सबको ले लें, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, और एक चैनल जो हमारा रीप का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीएम यूज का बना हुआ है उसमें सारे डीएमएम्स भी इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो विपिन मतलब अभी चाहे अभी 10 मिनट लेके सबको कर देना और सबके मोबाइल पे टीम्स हो जाए, क्योंकि उस चैनल में अच्छा है कि कुछ भी हम डालेंगे तो वो सबके पास रहेगा। ठीक है, एंड टीम्स इसलिए यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज व्हाट्सएप बहुत ज्यादा फ्लडेड हो चुका है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे 10-12 ग्रुप हैं जिनको मैं कभी खोलती ही नहीं हूँ और हजार मैसेजेस हो जाते हैं क्योंकि बहुत फॉरवर्ड से ये सब होता है, तो टीम्स में वो चीज है ही नहीं ऑप्शन। तो हम लोग टीम्स पे ही वर्क करेंगे और उसमें चैनल क्रिएट हो जाएगा हमारे फील्ड स्टाफ का, जिसमें डीपीएम्स और डीएमएम्स दोनों रहेंगे और हम लोग स्टेट पीएमए के लोगों बहुत ज्यादा फॉर्मल चिट्ठियों पर प्लीज विश्वास मत करिएगा। मैं आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो आई जस्ट लिटरली हेट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑन चिट्ठी चिट्ठी, कि मैंने मैडम उनको लेटर भेज दिया है, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि 90% लोग हम लोग जब अपनी डाक करते हैं ना तो हम कुछ और कर रहे होते हैं, ये आप लोग सब अग्री करोगे। तो आई डू नॉट बिलीव ऑन दैट। सेकेंड थिंग कि क्या होता है गवर्नमेंट में बहुत हमारी आदत है कि हमने बस लेटर भेज दिया तो हमारा काम पूरा हो गया, तो हम उसके कंप्लाइंस पे कुछ सोचते नहीं, क्योंकि हमारा तो काम था चिट्ठी भेजना, हमने कर दिया। तो अब आज की डेट में अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि कोर्ट में भी व्हाट्सएप और ये जो मतलब ये फोन पे भी जो डिस्कशन था दे आर एडमिसिबल, तो ऐसा नहीं है कि मैं कल को बोलूं कि अगर मैंने आपको इस पे तो कुछ लिख के भेजा था कि आपको ये करना है और आप बोलोगे मैडम चिट्ठी नहीं आई, तो आई एम सॉरी, मैं उसको जवाब को नहीं ले लूंगी। इट विल बी कि मैंने भेज दिया है तो इट इज सेव्ड, इट इज ऑन माय स्क्रीन और आपकी स्क्रीन पे भी है, तो प्लीज इसी मेथड को हम लोग फॉलो करें। आई एम नॉट सेइंग कि हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर देंगे, लेटर्स जो ठीक है, मेल्स एंड एवरीथिंग दे गोइंग, बट वो जो वो रहता है ना कि बस चिट्ठी भेज के अपना काम खत्म कर दो, बस वो एटीट्यूड नहीं चाहिए मुझे। दैट्स द ओनली थिंग आई वांटेड टू से। अब आपके सीडीओस को भी हमने ओरिएंट किया है, तो दे विल बी वर्किंग इन क्लोज कनेक्शन विद यू, एंड इसमें क्योंकि कन्वर्जेंस का भी बहुत ज्यादा रोल है, तो आप लोग लाइन डिपार्टमेंट से सब लोग काम करते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा जो मैं बिलीव करती हूँ थोड़ा सा रहेगा कि यूजीपीएस एंड यूएस आरएलएम का कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट, प्लस क्योंकि यूएस आरएलएम के आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें भारत सरकार की हैं इस समय एनआरएलएम में ऑलरेडी, कि ये भी करना है, ये भी करना है, मैं बिलीव अब तो उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट, हर चीज के ऐप बना रखी है, इसमें भी डेटा है, उसमें भी, तो वहां पे थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग के लिए वर्क है, ये वाला काम एक एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि आपको वो लोग काम तो करना ही करना है। बट एज आई सेड कि अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। सो ऑल ऑफ अस कैन डू समथिंग एंड दिस कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट टू लर्न। मेरा अपना पर्सनल सोचना ये है कि हम जितने भी लोग हैं वो इस पोजीशन में नहीं रहेंगे जब ये प्रोजेक्ट अपनी समाप्ति की हो जाएगा, बट हम इस प्रोजेक्ट के पूरे इस जर्नी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एंड वो ना केवल सिर्फ इसलिए होगा कि हम अपने एक रिकॉग्निशन के लिए करेंगे, देखो मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट किया, बट अपने खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, कि हम जहाँ थे क्या हम वही हैं जब हम स्कूल से कॉलेज निकले थे, कुछ हमारे स्किल्स में एनहांसमेंट हुआ नहीं हुआ है। तो आई थिंक उसी चीज को सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस क्रम में अगर इम्प्लीमेंटेशन के उस पे लेवल पे आप लोग के कुछ और सुझाव है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिए, सो दैट हम लोग, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी जिसमें हम लोग सब साथ पे बैठे और फिजिकली इंटरैक्ट कर पाए, तो किसी की भी कुछ सजेशंस है मोस्ट वेलकम होंगे। थैंक यू। Before they come with questions, I'd like to tell them in a couple of minutes the progress with the industry's brief. Thank you all. It's been very nice last 5 days, and project team ने तो रहना ही था, APDs आए, हमें बड़ी खुशी है और एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ। यहाँ मैंने देखा कि APDs और DPMs ना वो ऐसे बैठे हैं जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल होती है ना इंडो पाक बॉर्डर पे, तो इधर ट्रूप्स होते हैं, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो आई होप इट इज नॉट दैट आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, बट फील्ड में we go across each other's territory, which sometimes troops also do, and
मेरा अभी ये मैंने इसलिए इंटरव्यू किया ऑन द साइडलाइंस, मेरी इंडस्ट्री के जो डिप्टी डायरेक्टर आए थे उनसे बात हुई थी, तो उनसे जो हुई वो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता था। ये 2 किस्म के लीफलेट हैं, इसके अंदर मैंने भी नहीं पढ़ा, एक हरा है एक नीला है, आप लोग एक एक ले जाइए और पढ़ लेना। जो प्रोजेक्ट का हमारा नाम ही है रूरल एंटरप्राइज, तो लाइवलीहुड से हमें आगे जाना है। और प्रॉपर एंटरप्राइज मतलब एंटरप्राइज वो नहीं कि सब्जी लेके रोड साइड बैठे, इट मे बी टेक्निकली एन एंटरप्राइज बट वी वांट टू गो टू हायर लेवल एंटरप्राइजेस, गेटिंग देम इन ए एंड बी एरियाज ऑफ द स्टेट इंडस्ट्री के हिसाब से इट्स अ रियल चैलेंज। तो चैलेंजेस कुछ हमें भी थे पता थे, तो उनसे जो मैं डिस्कस कर रहा था वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, और हमें फिर सोल्यूशन ढूंढने हैं। अब ये कि जी लैंड नहीं है हम कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बिगेस्ट चैलेंज जो है बाहर वाले के लिए, लोकल लोग जो इंटीरियर में हैं उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, और बाहर वाले को हम 2 कारण से लाते हैं, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी may be sourced from some far away place or maybe another country also. तो जो बाहर से आएगा जो सेटअप करेगा, अब लैंड नहीं है, तो मैं उनसे पूछ रहा, अच्छा लैंड के लॉज, लैंड एलिनेशन लॉज सारे हिल स्टेट्स में फर्क है, तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बनाए हैं कि नहीं, या गवर्नमेंट की क्या लैंड्स हैं, तो वो बता रहे थे यूपीएसआईडीसी के टाइम कुछ बने थे, उनमें कंस्ट्रेंट ये है कि प्लॉट्स बहुत छोटे थे, 100 मीटर 200 स्क्वायर मीटर 300 स्क्वायर मीटर, और बहुत से प्लॉट्स लोगों ने ले लिए और वो ब्लॉक किए हुए काम नहीं शुरू हुआ। तो अभी उस तरह का डाटाबेस नहीं है, कहीं जगह उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो बिजली पानी पहुंचाया है। अब आप सब लोगों को अपने एरिया में जो भी इंडस्ट्रियल सेंटर बना था, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, हाँ, तो वो कांटेक्ट करके आप उन लोकेशंस को फिजिकली देखिए कि आपके जो प्रोडक्शन क्लस्टर्स बन रहे हैं वो कैसे लिंक हो सकते हैं, एंड ग्राउंड लेवल पर आप एक इन्वेंटरी बना लीजिए, लैंड अवेलेबल, land blocked, so that department can then cancel those allotments, and water availability and with quantity and electricity. तो power availability कितने किलोवाट की है, तो this is a kind of information you should have to invite someone. अगर ये नहीं होगा आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में, तो आप किसी एंटरप्रेन्योर को कहाँ क्या प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये कंसोलिडेटेड मुझे नहीं लगता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन होगी, ये आप ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पेक्टिव पीपल शुड मेक देयर ओन इन्वेंटरी, अ करंट इन्वेंटरी, जैसे वो रियल एस्टेट वालों के पास होता है कितने फ्लैट अवेलेबल हैं, किस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हैं। सर आई थिंक जीपीएससी के पास होगी डिस्ट्रिक्ट में, के पास होगी ये है नीचे एंड द ब्लॉक एंड बट हां, बट आप फिजिकली जाके देखें कि उसका स्टेटस क्या है, घास हो गई, कोई लैंड वॉश हो गई, ऑन रिकॉर्ड बहुत चीज होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम एंगेजमेंट करके 2-3 एंटरप्रेन्योर्स को भेजें किसी डिस्ट्रिक्ट में, पिथौरागढ़ में, तो आपके पास यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज देयर टू शो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट सेंडिंग समवन ऑन अ टीडियस जर्नी एंड देन दे गेट डिसअपॉइंटेड एंड कम बैक। प्लेन डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे घूमती है, इस केस में हमें सरकार को लोगों के पीछे घूमना पड़ेगा ए और बी एरियाज के लिए, हिल्स के लिए। तो एक तो लैंड, पावर, इलेक्ट्रिक, वाटर, वो चैलेंजेस मैंने बता दिए। प्राइवेट खरीदने में दो देयर इज अ सिंगल विंडो एट कलेक्टर्स लेवल, बट गेटिंग पीपल टुगेदर एंड लैंड रिकॉर्ड्स इट्स अ चैलेंज एंड एन आउटसाइडर विल गेट इंटिमिडेटेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो लुक एट दिस। फिर उन्होंने बताया कि उनके कुछ स्कीम्स हैं कैपिटल सब्सिडी की, 1 करोड़ की लिमिट है, तो 40% ए एरिया में, 35% बी एरिया में। मैं अलग से पॉलिसी पढ़ूंगा, क्योंकि अगर आप एक वायबल यूनिट बाहर से बुलाना चाह रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब बहुत कॉस्ट बढ़ गए हैं, स्टील, सीमेंट और वैसे भी हिल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो 1 करोड़ में भी टू लो टू अट्रैक्ट समवन। The project cost may be 5 crores, or if someone is setting up a cold chain or a fruit processing unit, it may be costing 5 to 10 crores. तो उसको हम अलग से देखेंगे, वो आपके उसमें नहीं आता। But my request to the few people is to make an inventory
एंड आप सब लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये देखिए कि अगर आपको वहां लगाना हो तो आप लगाएंगे रोड कनेक्टिविटी, मैप पे रोड होती है बट मे बी रोड सारी वॉश आउट हो गई है उस सेंटर की, तो इस तरह का आप थोड़ा सा देख लीजिए। एंड नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर यू अगेन। To just add to what sir said, क्योंकि विकास भवन में GMDICs आते हैं CDOs के पास एंड आप लोगों का क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है CDO के साथ, तो ये जो सर ने सजेशंस दिया है, I would request that our EPDs can go back to the districts, discuss this with CDO and CDO साहब को बोलेगा कि जैसे आप CDO साहब और GMDIC all three of you can sit together. GMDIC will get all the data कि भाई कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट पे पास्ट में अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है, वो डेटा एक बार निकल जाए एंड देन वी जो आगे बात हुई है मैं सीडीओस को भी कम्युनिकेट करूंगी कि देन दे कैन मेक वी कैन मेक अ सॉर्ट ऑफ अ जॉइंट दो लोगों का टीम बना के कि वो जाएं और उसको फिजिकली देखें, सो दैट कैन बी एन गुड आइडिया जो सर बोल रहे हैं कि आप लोग जाए, बिकॉज सी GMDIC को उसमें नहीं रखेंगे, मतलब उस टीम में नहीं रखेंगे बिकॉज अल्टीमेटली उनके अपना रहता है कि ये इसको कैंसिल करा के उसको देना है क्या देना है, तो इट्स बेटर कि आई वुड रिक्वेस्ट द सीडीओस कि वो एपीजी और आपके साथ कोई एक जिला लेवल अधिकारी को नामित करके एंड देन यू कैन गो एंड ऑल चेक फिजिकली अबाउट द स्टेटस ऑफ दीज लैंड्स, तो आई थिंक दैट विल बी गुड। या जैसे हमारे ब्लॉग्स में भी अगर वीडियोस हैं तो उनको बोल दिया कि फोटोज ये सब आप लाके दे दो, तो आप लोग उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कलेक्ट करा सकते हो, दिस आई डिस्कस विद सीडीओस एज वेल, बट आप प्लीज ये जाके सीडीओ से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट वुड बी। और नाउ द फ्लोर इज ओपन। एक चीज मैं भूल गया, दे हैव टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू डू अ लॉजिस्टिक स्टडी, और वो एक हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, तो डिफरेंट एरिया से इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या क्या है और क्या इंसेंटिव्स देने लगे हैं, तो पिथौरागढ़ की फर्क होगी और हरिद्वार की फर्क होगी, तो वो उनसे रिपोर्ट प्रोजेक्ट को वो दे देंगे, आपसे भी शेयर कर लेंगे, और E&Y उनके साथ 3-4 साल से काम कर रही है। लेट अस नॉट गेट इनटू द डिस्कशन काम अच्छा है या बुरा है, कुछ रिजल्ट्स आए होंगे, कुछ उन्होंने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो भी वो शेयर करेंगे प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू। बताइए भाई किसी को सजेशंस वर्कशॉप कैसी थी, अच्छी बुरी बहुत हो रहे हैं, ये ले लीजिए, हाँ एक एक हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पिथौरागढ़ में हूँ टीम लीडर, और फ्रॉम 2006 में UGS के साथ जुड़ा हूँ अलग अलग पोजीशन में, और अभी पिथौरागढ़ में मेरा चौथा डिस्ट्रिक्ट है काम करने का। यूनिट के टाइम से जब हम काम कर रहे थे और ILST में हमने फिर उसके बाद लाइफ पे किया, आगे हम रूरल एंटरप्राइज प्रमोशन पे जा रहे हैं। एक इशू जो हमने थोड़ा सा रिपोर्टिंग लाइन में जो फेस करते हैं उसमें ये होता है कि नॉर्मली हमारी यूनिट जो है टारगेट यूनिट हाउस होल्ड होती है, लेकिन काम हम करते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इंडिविजुअल होता है। SHG मेंबर, उसका हस्बैंड ने ट्रेनिंग ले ली, बेटे ने स्किल डेवलपमेंट का ले लिया, किसी ने पॉली हाउस ले लिया, कोई इनकम कर रहा है, तो वो क्यूमुलेटिव उनका जो भी एफर्ट, जो रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं उस हाउस होल्ड पे, और जो उनका क्यूमुलेटिव इनकम होती है वो कहीं पे कलेक्टिव वे में नहीं होती है। और जब भी रिपोर्टिंग के टाइम पे होता है तो इवन आइदर इन डिस्ट्रिक्ट, आइदर बाय द पॉलिटिशियन, आइदर बाय द शासन, हमेशा माना जाता है कि मतलब हाउस होल्ड लेवल पे आपने कितना इनकम किया या हाउस होल्ड लेवल पे कितना सपोर्ट किया, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कोई क्यूमुलेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हाउस होल्ड पे हमने कितना रिसोर्स मोबिलाइज किया, या हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन से किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लाइफ स्टाइल में, लाइवलीहुड में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। क्योंकि हम स्किल को करते हैं तो अलग तरह से रिपोर्ट, अलग जगह रिपोर्ट करते हैं, SHG का अलग जगह होता है, किसी ने पॉली हाउस ले लिया, हस्बैंड ने उसने अलग ले लिया, इनपुट दे दिया वो कहीं अलग हो गया। तो एक बहुत टाइम से एक आइडिया मेरे दिमाग में ही रहता है कि क्यों ना अभी हम MIS के फॉर्मेशन स्टेज पे हैं, और वहां पे हम क्या करें कि जो भी हमारे टारगेट हाउस होल्ड है उन सबको इंटीग्रेट करें एक हाउस होल्ड ID से, और हम ये कर सकते हैं उनका जो UID है, UID को इंटीग्रेट करें एक हाउस होल्ड ID पे, और जब भी हम किसी ने भी कोई भी बेनिफिट लिया उसका आधार नंबर डालें तो ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाए उसके हाउस होल्ड ID पे। तो इससे क्या होगा मैडम, एक तो हमें ये इजी होगा कि हमने किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड पे हम उस हाउस होल्ड का ID नंबर डालें या आधार नंबर डालें, तो MIS हमें ऑटोमेटिकली पूरा हिस्ट्री दिखा देगी फ्रॉम द
बिगिनिंग टू लास्ट हमने इस हाउस होल्ड पे किस तरह के कब क्या क्या रिसोर्स मोबिलाइज किए, आइदर इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, आइदर इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, आइदर इन फॉर्म ऑफ इनपुट्स, आइदर इन फॉर्म ऑफ जो भी दिया है। इससे ये पता चलेगा, इससे क्या होगा कि हमारी हाउस होल्ड पे रिसोर्स मैपिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी, एरिया पे हमारी रिसोर्स मैपिंग बहुत अच्छी होगी। कि ऐसा तो नहीं है कि पिथौरागढ़ के 8 डिस्ट्रिक्ट में से हमारे मैक्सिमम रिसोर्स जो है 3 आसपास के ब्लॉक में ही जो है मोबिलाइज हो रहे हैं। तो रिसोर्स मैपिंग होगी और हम जो उनका इनकम होगा उसको भी कर पाएंगे, क्योंकि मैम अभी हम इनिशियल स्टेज में एमआईएस डेवलपमेंट के, तो दिस कैन बी फॉर्म इजीली। तो ये एक आइडिया था मैम, बीच में सीएस सर ने भी सारे डिस्ट्रिक्ट में रखा था कि डीएम्स के कि अपने इनोवेटिव आइडिया कुछ दीजिए, तो ये आइडिया वहां से भी मैंने इसका 2 स्लाइड के प्रेजेंटेशन बना के दी। Yes, वो इतना ज्यादा डिसजॉइंटेड हो जाता है कि एक ही फैमिली के मेंबर को इतनी मल्टीपल जगह से बेनिफिट मिल रहा है और हम कभी क्यूमुलेट ही नहीं कर पाते। आज की डेट में हमें पता ही नहीं होगा कि एक फैमिली को इतने 18-20 डिपार्टमेंट्स जो बिल्कुल मैम, कोई एक जगह आता ही नहीं है। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट पे प्रेजेंटेशन दिया था उस समय मैंने यही कहा था कि आज की डेट में हम किसी भी हाउस होल्ड के पास चले जाएं, उसका कहते मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये बहुत इजी रहेगा कि डिजिटल फॉर्म में उसका किसी के भी फैमिली मेंबर का एक आधार भी डाल दें या आईडी डाल दें, तो ऑटोमेटिकली पूरा उसका हिस्ट्री दिखा देगा कि तेरे को किस डिपार्टमेंट से क्या और कैसे मिला। ये तो हो गया डिपार्टमेंट के अगर यस सर, जो एलिट कैप्चर वाला बात था, मैंने रिसोर्स मैपिंग का वर्ड यूज किया था उसके लिए कि ऐसा तो नहीं कि किसी गांव में अगर 100 हाउस होल्ड है तो सारे रिसोर्स जो है 10 या 12 हाउस होल्ड पे जा रहे हैं। ब्लॉक में ऐसा तो नहीं है कि कुछ सेलेक्टेड विलेज या डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ सेलेक्टेड आसपास के 3 जी बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ उसी के घर बैठ के 10-12 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। तो वी ऑल नो ये है और इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन हम यही बता रहे हैं व्हिच वी ऑल एग्री कि ये सॉल्यूशन है। एंड रादर हम पॉइंट है कि रादर हम अपने एमआईएस में अगर एक हाउस आइडिया हम क्रिएट कर सकें, बट अगर इसको पूरे स्टेट लेवल पे एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव देखना है तो आई थिंक मुझे ई डिस्ट्रिक्ट वाला सेंटर है, दैट इज अ मेजर पॉइंट कि वहां पे अगर हमारी बनने लग जाएंगी, क्योंकि सबके प्रमाण पत्र भी वहीं बनते हैं, वहां से बनी लग जाएगी तो ऑल अदर स्टेट एमआईएस जो डिपार्टमेंट्स के वो यहां वहां से डेटा फेच कर सकते हैं। इसमें मैंने ये मतलब एक जो प्रेजेंटेशन दिया था तो आइडिया दिया था कि हमको एक पोर्टल जिसमें केवल उस हाउस होल्ड आईडी से सारे आधार को लिंक करना है। जो भी डिपार्टमेंट जो है किसी को भी कोई बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ इनपुट, वो केवल एक एंट्री उस आधार नंबर पे कर दे कि ये दिया गया है और उसको इस आइदर कैश दिया है या उसको इनपुट दिया है। राशन कार्ड वाला हमारा जो डिपार्टमेंट है फूड सप्लाई, बेसिकली ये फैमिली वाला डेटा जो है ना वो उनके पास होगा या आयुष्मान जी। वो आप समझो अब क्या होगा, नितिका फर्नीचर फैमिली में 4 लोग हैं से ए बी सी डी, तो आपका बस ये कहना कि ए बी सी डी के आधार नंबर हमारे साथ लिंक है और जब एक को कोई स्कीम में बेनिफिट मिला उससे तो उसका आधार नंबर जब वहां डाला तो वो यहां वो ऑटोमेटिकली उसके जो है वो जो एक बेसिकली हाउस होल्ड क्रिएशन है कि नितिका फर्नीचर की फैमिली में ए बी सी डी लोग हैं, वो वाला जो है ना वो क्या तो हमें फूड सप्लाई से राशन वाले डेटा से उठाना पड़ेगा या हमें ई डिस्ट्रिक्ट पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो मतलब हाउसहोल्ड क्रिएशन होता है। एंड देन यू आर राइट कि अगर एवरी वैसे तो हमारी साइज के मार्केट का डाल ही है, जैसे वो डलेगा जैसे आपके इधर भी एसएचजी में भी डालते हो आप लगाना तो वो अपने आप इफेक्ट। तो एक ही आइडिया था कि क्या हम अपने यहाँ जो टारगेट हाउस होल्ड है क्या वहां पे हम इस तरह की मैपिंग कर सकते हैं, तो भी मतलब एज ए पायलट के तौर पे, क्योंकि फाइनली जो रिपोर्टिंग होगी उसमें हाउस होल्ड हमारी यूनिट है। नहीं इसमें कई बार डिस्ट्रिक्ट में कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन मैम इसमें क्या होता है कि उसको एंट्री कौन करेगा, कई समस्या है भाई तो स्टेट लेवल पे रिजॉल्व स्टेट लेवल पे जैसे कोर्ट एक में एग्रीकल्चर में वो लोग बहुत सारी चीजें देते हैं ना, हम लोग को क्या करना पड़ता है कि मैपिंग के लिए बोला जाता है, उससे मैपिंग कर लीजिए एसएचजी के मेंबर के पति को कुछ मिला है कैंप से कृषि विभाग से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको कहां से क्या मिला, बंदेगा भी क्या मिला, कुछ सारा कुछ आसान मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है नहीं वो ठीक है ये मैनुअली का यहां भी पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉसिबल नहीं है, और स्टेट लेवल पे तब अगला बताइए ये हो गया।
परमादरणीय अपर सचिव महोदय, जहां साहब जोशी जी, मेरे साथी उपाध्याय और सारे हमारे टीम के साथी में, मैं एक पहले से एक नाम चाह था कि थोड़ा हम मनरेगा का उपयोग इसमें हम कर सकते थे, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा छूट गया उसमें। जैसे कि एक उदाहरण बताऊं, जैसे मैं अभी 3 साल पहले चमोली में वीडियो था, तो एक ओरेकल करके एक संस्था है, तो उन्होंने हमारे से एक प्रपोजल दिया था। तो हमने क्या किया था कि जो उन्होंने प्लांटिंग मटेरियल और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज दी थी हर्ब्स के लिए, ऑरिगेनो और तुलसी और कुटकी और बहुत सारी हर्ब्स थी। मनरेगा में क्यों कि हम ये गाइडलाइन के हिसाब से ये फसलें नहीं कर सकते, हमने खाली लैंड डेवलप करके दिया उनको और उन्होंने उसमें प्लांटेशन कराया और बाईबैक उनका था। तो ऐसे हम जब रीप में जो हम अपने क्लस्टर डेवलप करेंगे, तो मान लीजिए जैसे कल एक मैंने सवाल उठाया था, तो मेरा मकसद कोई ये नहीं था कि किसी विभाग को टिप्पणी करनी है, ये था कि हाँ उनकी कमियों को हम कैसे फिल कर रहे हैं। जो पार्टनरशिप की बात चल रही थी, स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली, वाली सूप पहले दिन से चल रही है, तो जैसे कि कहीं पे डिलीवरी पॉइंट नहीं है, डिलीवरी बॉय की बात नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे परिवारों के बच्चे, तो उनकी उसको जो है हम अपने उन परिवारों के माध्यम से वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये चीजें मैंने देखी, मैं अभी एक जगह में गया था, तो वहाँ एक हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हिमोर करके, प्लांट ग्रोथ को वो प्रमोट करता है, वो पूरे के डेट में पड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है जो डिलीवर कर पाए, जबकि मैं बड़ा तड़प उठा क्योंकि मुझे वो था कि, तो मैंने कहा तुम ब्लॉक चले जाते, वीडियो साफ करने वाले थे, वीडियो खुद ही उनके प्रधान आते कहते कि आप ले जाओ, ये फसलों की अच्छा है, वो क्या हम इससे फिल कर लेते। तो अब जैसे मैंने वो आंवला का वो दिया था, तो उदाहरण के लिए कोई डायरेक्टर साहब से उन्होंने कहा कि अदरक भी तो है, लेकिन अदरक को हम मनरेगा से नहीं लगा सकते, आंवला बैरल रेट में होता है, दूसरी बात जो है वो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं है, और खेत के खेत खाली पड़े हैं, खेत के खेत आप किलोमीटर चले जाइए, पौड़ी में खास करके, टीरी और चमोली और उत्तरकाशी में तो खेती हो रही है, लेकिन पौड़ी में तो लगभग गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, तो उसमें वो जो लोअर पौड़ी की हाइट में दिक्कत कम है, गर्म जलवायु उस जगहों पे ये मेरा सवाल था, मनरेगा की हम हेल्प ले जहाँ तक हो सकता है कि जैसे मैम हम कोई क्लस्टर अगर हम उसका एरोमेटिक प्लांट्स का बना रहे हैं, तो हम कम लैंड डेवलपमेंट उससे करा रहे हैं, बाकी हम रीड करता रहेगा। और लास्ट में बस ये वो कमिटमेंट जो सचिव साहब ने कहा और डेडिकेशन, क्योंकि मैं यूएसआरएल में मैम हम 2013-14 से जुड़े हैं, हम लोग यहाँ जब कोई हमारे पास सीआरपी और कोई स्टाफ नहीं था, तो हमने जुड़ के बोरों पर बैठ के समूह बनाए, जो देहरादून में आजकल बहुत आगे जा चुके हैं वो समूह। तो अभी लगता है कि थोड़ा सा ना उसमें हमें डेडिकेशन चाहिए और वो आगे बढ़ा सकें। तो और रही बात वर्कशॉप की, तो बहुत ही, क्योंकि शुरुआत ही बहुत अच्छी रही है मैम, और जो वो अप्रोच आई है कि साथ बैठेंगे, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जिलों में जैसे हमारे सुरेश पंत वगैरह, मुझे लगता है रोज मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा किसी और में भी बिजी हो जाता हूँ, तो आगे सुबह जगा देते हैं कि सर ये रीड का ही होगा। तो ये बहुत अच्छा है शुरुआत आपका आइडिया रहा, सचिव साहब का रहा हो, तो उसके लिए मुझे धन्यवाद करना है। और वर्कशॉप की जो है वो बहुत अच्छी निकली मैम, और बाकी आप जो कहते हैं बाद में भी हम करते रहेंगे कि मेरे साथ भी बात हुई कि सब साथ में बैठेंगे। यहाँ पे हम जो बैठे ना, इट्स लाइक मिक्स ग्रुप, ठीक है, कुछ प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं, IFAD ऑफिशियल्स हैं, मैं हूँ, आप मुझे अपने विभाग का पार्टनर के कुछ ऐसा, बट जब हम एक मिक्स ग्रुप होते हैं, तो देखिए सबके अपने अपने रेजर्वेशंस होते हैं। हो सकता है मैं सोचूं कि अच्छा मैं सरकारी अधिकारी हूँ, आई वांट टू ओनली स्पीक टू सरकारी पीपल, व्हाई शुड आई स्पीक टू प्राइवेट पीपल, बट उसका एक सबसे एडवांटेजेस और पॉजिटिव पॉइंट अगर आप लोग सब लेंगे, तो ये लेंगे कि आप लोग को एक दूसरे से कितना सीख सकते हैं। और टाइम्स मेरे को मतलब हमेशा ये लगता है कि मेरे पास हमेशा एक ऑप्शन है कि या तो मैं उस चीज को नेगेटिव देखूं, जैसे कहते हैं ना कि वो ग्लास आधा भरा हुआ आधा खाली करके, कि अगर मैं नेगेटिव लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ कि ठीक है यार मैं पर्टिकुलर लेवल पे हूँ, अदर पर्सन इज आल्सो सेम डूइंग द वर्क एट द सेम लेवल, व्हाई शुड आई give my suggestions and why should I take his suggestions. But दूसरे के साथ मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि okay, let me take out the best from the other person and give my best. तो ये मतलब I have
this theory throughout my life. ठीक है, instead of and I'm not saying there are times which we actually feel कि अच्छा ये person आ गया ये तो I think I'm going to overpower my skills और ये तो मेरे से better है और ये but then on the other side also think कि अच्छा कुछ अच्छी चीज़ अगर सामने वाले इंसान है तो why can't I adopt it and do my own development. Why I'm saying so कि मैं इस project की उसमें point of view पे क्यों लेकर आई हूँ कि इस project में एक consulting firm का भी provision रखा गया है जो hire होगी. And I was talking to जो design के टाइम पे मनीषा मैम और वंदना मैम इन्वॉल्व थे and as per me वो हमेशा से ग्रामीण विकास का बहुत ही मतलब इंटेंसिव पार्ट रहे हैं दोनों लोग. तो उसमें वंदना मैम से जो मेरी बात हुई जब वो डीम अल्मोड़ा है तो उन्होंने बोला कि the reason that we wanted consulting firm to come was because कि हम ये सोचते थे कि यार हमारे लोगों का स्किल एनहांसमेंट कब होगा कि हमारे लोग इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे वो बाहर के लोग भी जब आएंगे कंसल्टेंट्स भी आएंगे या बाहर और भी जो लोग काम कर रहे हैं तो वो जब दोनों एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग एक्सचेंज करेंगे तो डेवलपमेंट होगा ना दोनों का. नहीं तो आज की डेट में आप लोगों को मैं क्लियरली बता रही हूँ बिकॉज जब हम लोग अपने 3 महीने के स्टेट में भारत सरकार गए थे एज IAS ऑफिसर्स और हम लोग का वहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप होता है तो वी आल्सो सी कि भारत सरकार में सब कंसल्टेंट्स भरे हुए थे और हम सोचते थे यार व्हाट इज द नीड क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी बेकार हो गई है कि ये सारे कंसल्टेंट्स यहाँ पे हैं. बट देन एट द हाइंडसाइट वी रियलाइज कि शायद एक पॉइंट ऐसा आ चुका है कि हम लोगों ने रिसर्च करना है या हम लोगों ने बहुत चीजें नहीं जानना है बंद कर दिया है और वो सब वो दे गेट ऑल दीस थिंग्स ऑन द टेबल. तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड फॉर टू लर्न फ्रॉम देम. तो वैसे ही चीज वही अप्रोच आप लोग भी इस प्रोजेक्ट में अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के पूरे जो भी मेजॉरिटी कार्यकाल होगा जिसमें अपना अपना टाइम देंगे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हम लोगों के लिए कि हम सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे हम उनसे लर्न करें. देयर विल बी लॉट ऑफ प्राइवेट मार्केट प्लेयर्स व्हिच विल बी कमिंग तो उनसे भी हमें सीखना इंपॉर्टेंट है. हम सब आगे अपनी लाइफ में जब आगे जाएंगे तो आई एम श्योर जब सरकारी तंत्र में रहेंगे कुछ रहेंगे तो हम इन सब चीजों से आगे भी डील करेंगे. ठीक है. तो जैसे जो पीडी साहब ने बोला कि जहाँ पे जैसे इसमें भी आओगे मैंने बोला मनरेगा को भी हम फैक्टर इन करें. वाई मेरे दिमाग में चीज आई कि थिंग्स प्रोजेक्ट में जो लिखा है डिजाइन डॉक्यूमेंट में वो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है बट वो ये नहीं कहता है कि ये ही होना है. वो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है. दैट मॉडल कैन कम फ्रॉम द फील्ड. आप मुझे बता सकते हो कि मैम अगर हमें ये ड्रजरी इंडक्शन करना है तो क्यों ना हम एक मॉडल बनाएं जिसमें मनरेगा का ये कंपोनेंट डालें एग्रीकल्चर का ये कंपोनेंट डालें किसान का ये कंपोनेंट डालें हमें ये करना चाहिए. तो ये सारी चीजें आपसे ही मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ. मतलब मैं आई एम बीइंग वेरी आई वुड से सेल्फिश और व्हाटएवर कि मैं नहीं करूंगी बैठ के आप लोगों के लिए आपसे ही मैं लूंगी और उसी में भी मैं जो फाइनल ट्यून करके जो बेस्ट होगा वही मैं आपको दूंगी. आप सोचो कि पीडी मैडम बैठ के प्लानिंग करेंगे मैं नहीं करूंगी. माय टास्क इज टू गेट वर्क डन फ्रॉम यू नॉट डू वर्क फॉर यू. तो मैं यही करने वाली हूँ. तो मैं आप लोगों से क्लियर कर रही हूँ. दिस इज विल बी द स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड. जैसे आप इंडस्ट्री के लिए बता रहे थे इंडस्ट्री के लिए बता रहे थे कि प्लॉट्स जो हैं पहले आवंटित हुए और अभी आप डेटा बना लीजिए. तो जैसे हमारा कॉडिंग है तो उसमें कोटद्वार के आसपास ही वो इंडस्ट्रियल एरिया है और बाकी जिला बहुत ही बड़ा है. मुझे तक 200 किलोमीटर तक ऋषिकेश से नहीं डाला जाए मुझे तक 300 किलोमीटर जाना पड़ेगा इतना बड़ा स्टेज है. तो स्कूल्स जो हमारे हैं काफी वो बंद पड़े हैं जिसमें छात्र जो है उसका यूज हमने ग्रोथ सेंटर के लिए 2-3 स्कूलों का किया है ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए. तो क्या हम उस पर भी हम विचार कर सकते हैं. वो बिल्डिंग अबेंडन है वो बिल्डिंग है थोड़ा सा उसको रिनोवेट करेंगे तो ये चंपा ने बहुत अच्छा ही आइडिया दिया था कि जैसे उन्होंने मैप किया है जैसे कलेक्शन सेंटर्स बनाने हैं. ठीक है. अब कलेक्शन सेंटर्स का अगर आप कंपटीशन देखो तो उसमें रखा हुआ है कि सपोज 2.5 लाख के कलेक्शन सेंटर्स हैं उसमें लिखा है कि 30% इफाड देगा और हमें बाकी जगह से लेना है. तो इस बेटर अगर हमारे पास ऐसी अबैंडन्ड स्कूल बिल्डिंग्स हैं तो व्हाई नॉट वो रेनोवेट बड़े बन जाएंगे वही पूछ रहा उसी में पैसा. अच्छा दूसरी चीज मतलब इसमें भी मैं आपको एक व्यू देना चाहूंगी कि मैं जैसे अगर मैं आप लोग की जगह हूं देख लिया कि ये भाई अबैंडन्ड बिल्डिंग्स है आप मुझे देखोगे आप कहोगे कि मैम इस स्टेट लेवल से हो गया कि एजुकेशन वाले हमें दे रहे हैं और ये तो कभी नहीं होगा. ठीक है. कुछ मत करिएगा. डीएम साहब के पास जाइएगा कि डीएम साहब ये है मतलब सीडीओ साहब के रूप करते हुए कि सर ये है इसको मैं ऐसे यूज कर रहे हैं बस आप परमिशन दें दैट्स इट. ये इज लाइक द फाइनल अथॉरिटी. हम सबको पता है कि डीएम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं तो आपको वही अप्रोच अडॉप्ट करना
नहीं वो हुआ भी है। अगर आप सोच लो, अगर मैं आपको हाँ भी बोल दूंगी ना, मैं नहीं करा पाऊंगी। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, आप लोग मतलब स्टेट की वर्किंग, और मैं भी अब स्टेट पे ही गुजर जाती हूँ, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। एजुकेशन वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, आप देते हमारी बिल्डिंग है, तुम्हारा एसेट है, हम इधर भी दे देंगे। जस्ट डू अ लोकल अरेंजमेंट। मैडम इस संदर्भ में जो आप मार्गदर्शन माइक लो बाजी। सभी को नमस्कार। मैं वीके भट्ट रमकांत भट्ट टीम लीडर के रूप में कालसी देहरादून देख रहा हूँ। मैडम हमारे पुराने अनुभव है आईएलएसपी की, उसमें मुख्यालय से पर्यटन मुख्यालय से आदेश निर्गत हुए थे कि आप जितनी भी अबेंडेंट बिल्डिंग है सारे जनपदों में जहाँ जहाँ इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा था, कुछ पशुपालन विभाग की थी, कुछ कृषि विभाग की थी, कुछ सिंचाई विभाग की थी, हम लोगों ने काफी प्रयास किए। एक यहाँ से सेट फॉरवर्ड किया हुआ था, लेकिन मैडम उसमें संबंधित विभाग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स थे उनका हमेशा ये कहना था ये तो निदेशालय से ही हो सकता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स मैडम ऐसी हैं, जब हम लोग कलेक्शन सेंटर के डिपार्टमेंट जो है ना वो डीएम के अंडर है डिस्ट्रिक्ट में। यस बस बात ही खत्म, वो डिपार्टमेंट आप करो, दैट इज द होल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अनुसार बता रही हूँ, विभाग तो कभी कुछ कह रही हूँ कि भले बिल्डिंग पता है वो आने वाले टाइम में जर्जर की किस्म गिर भी जाएगी, बट वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेगा ना कि मैं आपको दे दूँ। So this arrangement can only be done by DM with a simple 4 line of order निकाले DM से focus. That is that. नहीं सही कहा मैडम आपने। हमने अल्मोड़ा में 25 ऐसी जगह है जो डीएम ने अपने उसके दे दी। इवन रेवेन्यू लैंड पे भी हमारे कलेक्शन जनरल। और आपकी जैसे मैंने अल्मोड़ा का एग्जांपल ले कि मैं आपको एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं डीएम और मैं शेड्यूलिंग नहीं कर रही हूँ, तो यू कैन ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि मैम वो फलाना डीएम साहब तो करती है मैडम, तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी अच्छा फलाना डीएम साहब ऑर्डर नहीं करा दे तो this is how we need to get things done. This is how it happens. और जो करवाल साहब ने क्या हुई, जब मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी से कहा मैं बिल्डिंग दे देंगे तो कह रहे मैं तो सारे लिखूंगा। मैंने कहा ये डेढ़ का है सफाई में। तो अच्छा सर आप काम शुरू कर लो, मैं अपना बात करता रहूँगा। This is how it happens. वो अच्छा भी दे सकता Absolutely. नमस्कार, मैं बेबी जोशी एपीटी चंपावत हूँ। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है कि उस पर भी कुछ डिस्कशन हुआ है या नहीं। जैसे हम लोग पहले लाइवलीहुड ट्रेनिंग्स दे रहे थे जो हमारे इंस्टीट्यूट थी, तो ट्रेनिंग्स तो हम लोग लाइन अप कर देते हैं कि इस तरह से ट्रेनिंग्स होंगी और कौन कौन डिपार्टमेंट्स को ट्रेनिंग करेंगे। पर होता क्या है कि हमको जो क्वालिटी ट्रेनर्स हैं वो नहीं मिल पाते, तो वो पूल ऑफ ट्रेनर्स कुछ बनाने के लिए कुछ हम सोच रहे हैं। प्रोजेक्ट में एक्चुअली काफी टाइप की ट्रेनिंग्स रखी गई है, ठीक है, और सी जो हम एसएचजीस में लाइव ट्रेनिंग देते हैं वो तो थ्रू आरसीटी देते हैं, ठीक है, मोस्ट थ्रू आरसीटी होती है। एंड आई टोटली एग्री, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान थी आरसीटी की ट्रेनिंग से। मतलब मुझे भी लगता है कि दे वर जस्ट गुड फॉर नथिंग, मतलब कुछ नहीं करते हैं। और इस प्रोजेक्ट में वो ट्रेनिंग सही नहीं है। मेजॉरिटी जो ट्रेनिंग्स हैं वो डिपेंड करता है कि जब हम गोइंग फॉरवर्ड जब हम वैल्यू चेन पे जाएंगे, सी कॉन्सेप्ट सिंपल है कि सीएलएफ हमें पता है कि सीएलएफ को हमें एक लेवल पे आके खड़ा करते हैं, बट हमारी सीएलएस लाइवलीहुड के डायरेक्शन में जा नहीं पा रही। यूएसआरएल हमको लेके जाने की कोशिश कर रहा है, बट यूएसआरएल अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे। तो प्रोजेक्ट ने एनरिसर्च किया कि क्यों ना हम इधर इंटरवीन करें और हमको आगे लेके जाएं। तो तभी जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट से जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी तो प्रोजेक्ट में आएंगे, वो सीएलएफ लेवल पे इंटरवीन करेंगे। दे विल टेक आउट द बिजनेस आइडिया कि अगर ये सीएलएफ है, ठीक है, या ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये वैल्यू चेन आएगा, मैं इन सीएलएफ को उस वैल्यू चेन से जोड़ दूंगा, तो ये सीएलएफ को मैं बिजनेस ओरिएंटेशन की तरफ ले जाऊंगा। तभी वो एडिशनल स्टाफ हायरिंग और ये सब की भी बात की गई है। वहां से जब बिजनेस ओरिएंटेशन में जाएंगे तो उसी प्रकार से जहां तो डिसाइड होगा दैट व्हाट इज द बिजनेस दैट वी वांट टू टेक दैट, दिस इज वेयर द ट्रेनिंग वर्क्स एंड दे विल कम फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अग्री। एंड वो प्रोजेक्ट में बहुत क्लियरली उनके डॉक्यूमेंट में आप लोगों को भी हम लोग शेयर करेंगे और क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो ट्रेनिंग डिसाइड होनी है, तो you should actually get these full of experts and then you should basically decide on the training. So this project would be doing, and definitely we will try to have good quality training, otherwise कोई फायदा नहीं है, वो वैसे ही मिल जाएगी जैसे आरसीटी वाला। एक और चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगी इसमें, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जनरली वो थोड़े ज्यादा हाई फाई हो जाते हैं, तो फिर वो उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। छोटी सी चीज है, जैसे हमारे यहाँ जो सीएलएफ हैं उनको नर्सरी बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी थी, तो हुआ क्या कि वो फिर एक टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई और उन्होंने बोला ऐसे करना, तो फिर मैंने डीएचओ साहब से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक माली भेज दीजिए
जो देखता है कि कैसे करना है काम को, तो वो बता सकता है कि एक्चुअली कैसे काम होता है। जैसे पॉली हाउसेस में हम लोग पॉली हाउसेस तो बहुत दे रहे हैं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनको पॉली हाउसेस दे रहे हैं, पर उनको पता नहीं है कि उस पॉली हाउस का यूज कैसे करना है। उसका जो स्पेस है, जो हम हॉरिजॉन्टल स्पेस को यूज कर रहे हैं, वो लोग वो जानते हैं, पर वर्टिकल स्पेस उसका यूज नहीं कर पा रहे। तो वो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हो, तो मतलब ग्राउंड में हो, प्रैक्टिकली हो, तो वो इफेक्टिव है। Very well, ma'am. Even in Australia, polyhouse success is only 40%. ये पॉइंट वेरी वेरी तो देसी ट्रेनर चाहिए ना। नहीं, वो कल एक्चुअली सबने भी बात करी थी कि देयर वाज टाइम कि भाई माली चाहिए, ऊपर इतनी जॉइंटेड बैठने वाली। एंड एक्चुअली मतलब ये मैं एक्चुअली हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं फाइंडिंग अ माउंटेन। मैं पर्सनली स्ट्रगल कर रही हूं, पर माय ओन पैकेज। सबसे कौन आने लगा कि सामने के हमारे गांव में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। अरे क्या होता है, मैंने मालूम है सेचो को हां, बट सेचो के टेल मी कि अच्छा मैम इसलिए ये अच्छा लगा सकती है, अच्छा लगा सकती है, अच्छा लगा सकती है। बट भाई मुझे तो कोई समझी ना जो आके बताए कि मेरे गार्डन में होना क्या है, कि मुझे अब खाद डालनी है, मुझे कब उसकी गुड़ाई करनी है, मुझे कब करना, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। अब मैं सीएचओ को तो नहीं बोलूंगी गार्डन में कब गुड़ाई करूंगी। आज से 20 साल पहले मैंने पट्टे लगाया था लीची का। उसमें डॉक्टर दिनेश कुमार है, बहुत ही इंडिया में कहते हैं उसने लीची पे काम किया 20 साल 10 में उनकी बेइज्जती हुई है। और ये डॉक्टर दिनेश कोहली जब चमोली के उन्होंने उनके एंडो में फेंकी थी, तो डॉक्टर गणेश कुमार ने वो बगीचा लगाया और उसमें मोर्टेलिटी 90% थी। तो मेरा जो छोटा भाई है खेती देखता उसका 8 पेड़ मर गए, उसने ट्रैक्टर उठाया और सारा वो जो दिया कहा कि हम ये सब काम नहीं करेंगे। अगले साल मैंने एक मेवालाल नाम का माली आया, डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर मैं आपका बगीचा लगा दूं। हम लोगों ने कहा भैया मैं माफ कर दो, तुम जाओ। उसने कहा नहीं हमसे आप लगवाइए ना, वापस हम लगाएंगे, आपका 5% भी नहीं बढ़ेगा। वो 10 चक्कर मारे, मेरे पिताजी के पीछे पड़ गया एक बार। पिताजी ने कहा चलो तुम लगा। मैं वो बगीचा का सक्सेसफुल है। उद्यान विभाग जब भी भारत सरकार की टीम आती है उसी अवसर को दिखाना चाहते हैं, मेवालाल ने लगा। नहीं आई पॉइंट वेरी वेल टेकन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दैट इज ट्रू कि हमें वो थियोरेटिकल और सबसे बेटर हमें वो एक प्रैक्टिकल इंसान दे दो, भले कुछ एक्सपर्ट भी ना हो, बट ग्राउंड वो मैम जो हमारे सेटअप और परिवारों में जो थोड़ा ट्रेन करा रहे हैं, ऐसे में कह रहा था वो डिलीवरी को हमारे बंदे जो सर्विस है, पर उनको ट्रेन कराने के लिए भी ट्रेनर अच्छा चाहिए। दैट इज अ प्रॉब्लम। जिसने ग्राफ्टिंग एक होता है थ्योरी को कलम चढ़ाते हैं ना पौधे पे, तो अभी एक प्रोजेक्ट में हम 43 एमएससी यंग ऑफिसर्स एचडीओस को भेज रहे हैं फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू यूरोप। क्योंकि सक्सेस तो हुआ है ना, आपने 100 ग्राफ्ट किए, सक्सेस कितने हुए? कुछ लोग जानते हैं हम जैसे मिस्टर सुधांशु नेगी है, वो बॉडी बिल्डर वाले हैं, टारगेट करके उनका वो ग्राफ्टिंग में मास्टर है, तो बुढ़े बस जबकि मैं उद्यान से पूछता हूँ ग्राफ्टिंग, तो बोलते हैं कि सर यूपी के टाइम में रामपुर में माली होते थे, वो ग्राफ्टिंग जानते थे। वो रामपुर हमारा यूपी में चला गया तो उत्तराखंड में कोई ग्राफ्टिंग नहीं जानता, लेकिन मिस्टर नेगी है वो बहुत अच्छी ग्राफ्टिंग जानते, तो ऐसे लोगों से ट्रेन कराएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ मैम, इसी में थोड़ा सा आगे एक चीज और रखना चाहूँगी। ट्रेनिंग वाली बात मैं भी फील कर रही थी, जिस समय पार्टनर्स वाली बात की आई थी, शायद उस समय हमने ट्रेनिंग पार्टनर्स की बात या नहीं आई प्रेजेंटेशन में। अब एक चीज जिसकी हमें और जरूरत रहेगी, क्योंकि हम एज यूएसआर हमने हमेशा स्टडी किया है मार्केटिंग को लेकर, जैसा आप कह रहे हैं, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है कि हमें इसमें हेल्प करेगा। मैम अभी पहले दिन शायद बात आई थी स्टैंडर्डाइजेशन की, ये प्रॉब्लम हम हमेशा फेस करते हैं कि कोई प्रोडक्ट्स में वेरिएशन, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो आई थिंक उसका भी तरीका ये है कि जब किसी भी चीज को लेकर एक वैल्यू एडिशन या किसी भी प्रोसेसिंग की जब हम बात कर रहे हैं, उसके ट्रेनिंग कंपोनेंट में उस चीज को बनाने के एक बिल्कुल सेट स्टैंडर्ड्स हो, लाइक वही एक तरीका मेरे ख्याल से यूनिफॉर्मिटी ला सकता है। अदरवाइज सो मेनी पीपल डूइंग द सेम थिंग, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आए ये मुश्किल है। जैसे ब्रांड में होता है ना, उनका हम जितनी बार भी खरीदे वो सिमिलर होता है, तो वो जो अगर हमें अपने ब्रांड की वो बनानी है, मार्केट में जगह बनानी है और एक स्टेबिलिटी बनानी है, तो वो यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी है। और उसमें भी जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ये मैम एक बार आगे के साथ हमने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वर्कशॉप की थी, तो वहाँ कई सारे एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे लेवल पे काम कर भी रहे, वहाँ भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई एकरूपता है नहीं। आज यहाँ से लांच का चार उसी जगह से अगर दोबारा खरीदो तो उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता है। तब काफी डिस्कशन के बाद ये बात निकली थी कि जब ट्रेनिंग दी जाए, सपोज 1000 को बनाने की है, तो उसमें एग्जैक्टली एक रेशियो आम का चाय तो कौन सा चाय कितना कितना, तो शायद उससे आ सके। तो अगर हम ट्रेनिंग्स इस तरह की जब प्रपोज करते हैं
है तो एक स्पेशल फोकस मैं चाहूंगी कि इस पे भी मेंटेन किया जाए ना, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स पे रिलायबिलिटी कभी बन पाएगी, अदरवाइज लोग उतना भरोसा नहीं कर पाएंगे। I will supplement you further. आपने तो कहा ना यूनिफॉर्मिटी, अब अचार आम का भी है, आंवले का भी है, मतलब गाजर मूली का, सबकी रेसिपी अलग होगी। तो हो सकता है आपको 2-3 ट्रेनर्स बुलाने पड़ेंगे, कोई उसका माहिर है, कोई उसका है। हाँ सर, वो चलेगा, बट जितने भी लोग काम करें उनके पास से क्या है वो रिटर्न में हो पूरा रेशियो एंड ऑल, ताकि वो अप्रॉक्सीमेट तो सेम आए, हम उस तरफ जा सकें। रेसिपी डेवलपमेंट एक अलग पार्ट है। हाँ, मतलब जो भी है सर, बट हमें चाहिए कि हाँ ये चीज बहुत जरूरी है। मैम, can I say one thing? Yeah, मैम एक USRLM का हेलो मैम, एक USRLM का प्रेजेंटेशन हुआ था मैम कुछ हफ्ते पहले ऑफिस से, तो एक उनका प्रेजेंटेशन में मैम हमने एक चीज नोटिस की थी, जो वो CLF से DO से जो SFGs को लोन देते हैं, तो उसमें क्वेश्चन करके आया था कि वो जो मैकेनिज्म है वो मैनुअल यूज करते हैं, बिकॉज NRLM का बाकी मैकेनिज्म तो बहुत अच्छा है, वो CCL ऑनलाइन बैंक से ट्रैक कर पाते हैं, बट इनके लिए वो मैनुअली यूज कर रहे हैं, उनके जो रजिस्टर भी यूज कर रहे हैं, बट अगर उसकी रिपोर्ट हम ऑनलाइन देखना पहले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसमें क्या है मैम, ये ऑथेंटिसिटी और डेटा का थोड़ा एरर हो सकता है। लास्ट टाइम जब उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था वो मॉडल CLF में देहरादून में ऐप यूज करने वाले हैं, जिससे वो सब चीज लोनिंग का ABC का भी लोनिंग लिया है, बट वो ऐप का ज्यादा उन्होंने बताया नहीं था। तो मेरा एक सजेशन ये था, जब हमारा MIS इंटीग्रेट हो ही रहा है, तो जैसे मैम IFSC का बहुत रोबस्ट MIS जैसे सिविल से दिखाया भी था, HSM ने बहुत अच्छा बनाया भी था, वो ज्यादा से काफी गाइड भी किया था कि कैसे होता है, तो हमारे यहाँ पूरा रिपोर्ट निकल जाता था कि इंटरलोडिंग कितना है क्या है, तो वो थोड़ा सा लैग है NRLM में, तो अगर इनिशियल स्टेज में हम लोग उसको कैटर कर पाए तो वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि NRLM में मोस्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन से ज्यादा काम होता है, और वो एक ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा पे कैटर हो पाएगा, क्योंकि उन पे अकाउंटेंट आ ही जाएंगे जो उनसे पैसा लग रहा है, तो और मेजर काम उनका उसी में है। तो ये टोटली आई थिंक ये पॉइंट है कि ये मैनुअली चलते हैं रजिस्टर। अरे भारत सरकार ला तो नहीं है मैम, वो ऐप का बताया था उन्होंने, वो अभी मॉडल CLF पे करेंगे, पर एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसका इंटीग्रेशन अगर हमारे MIS से भी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डेटा कैच हो जाएगा, तो रिपोर्ट हम लोग देख पाएंगे। मॉडल CLF में तो उसने वर्क होना शुरू मैम जिस ऐप की बात हुई है और लोगोस ऐप है, अभी ऑल ओवर इंडिया के 4 स्टेट में फूड ब्लॉक्स में पायलट हुआ है, तो उस मोबाइल ऐप के माध्यम से आगे ये सब चीजें हुई, इंटरनल लोनिंग जो वो करे उसका रिकॉर्ड पूरा हो पाएगा। अभी ये आप लोग कह रहे हैं कि इंटरनल लोनिंग के लिए हमारे एमआईएस में कोई प्रोविजन नहीं है, वो मैनुअली वो लोग करते हैं, लेकिन अभी मैम उसको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सैसको ब्लॉक से स्टार्ट किया था, सैसको ब्लॉक में लगभग 1 साल हो गया है, पायलटिंग चल रही थी, अभी हमने यहाँ के जितने ब्लॉक्स हैं सभी को ट्रेनिंग उसमें दे दी है, बट उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी कंट्री में केवल 4 ब्लॉक में अभी इसको किया है, धीरे-धीरे इसको रेप्लिकेट करने की बात हुई है। और जहाँ एप्स की बात हुई मैम, एनआरएलएम में 22 तरह के मोबाइल ऐप्स जो वो बनाए जा रहे हैं, अभी हमको लिस्ट आई है एनएमएमयू से, तो हर एक चीज के लिए अलग ऐप है, इतने ऐप को हैंडल करिए। थोड़ा सा भी जब हम डेटा इंटीग्रेशन की बात करते हैं एनआरएलएम, तो मैंने वहाँ पे जब उनकी टेक्निकल डायरेक्टर से हमारा सेशन होता था, तो ये एक्चुअली टॉक अबाउट कि हमारे जो 21 मॉड्यूल्स है, तो हमें भी तब थोड़ा लगा कि हम मतलब ये 21 मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट तो यहाँ करा लेंगे, बट ऐसा ना कि हमारा खुद का एमआईएस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि वो समझ नहीं पाए। एक्चुअली मैं बस शेयर करना चाहूँगी कि आईएसटी के एमआईएस में क्या अच्छी बात थी, वहाँ भी जैसे वही बात है, जैसे अभी सीएलएफ और वीओ और इन सब की इंटरलोनिंग भी नहीं आ पा रही है, वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन अकाउंटेड फॉर, एवरीथिंग, और इनफैक्ट जितनी उनकी ऐसी काम कर रही हैं जो कर रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने टैली में करा है, they have an actually very good accounting software they have been using, फिर टैली से हम सारा डेटा इधर जैसे फेच हो गया, तो मुझे किसी भी एलसी का कभी भी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प जाना है तो वो मैं देख सकती हूँ, तो ये चीज मैंने आईएलटीएस में देखी कि बहुत ही अच्छा किया। और देखिए अल्टीमेटली बात समझिए, आईएलटीएस के भी एलसी के जो लोग हैं वो अल्टीमेटली खेल हमारे गांव के लोग हैं एंड दे कुड डू इट, तो हम अगर गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि एनआरएलएम में मुझे नहीं पता वो जो इंटरलोनिंग वाला ऐप हो कितना डेवलप हो, बट एक पॉइंट पे हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि ठीक है भाई सीएलएफ और वीओ की जो इंटरलोनिंग है वो एटलीस्ट हम लीग के एमआईएस में डालना शुरू करें, ताकि वो
रिफ्लेक्ट हो रहेगा, अदरवाइज फायदा नहीं। यस मैम, एग्जैक्टली, क्योंकि अगर उससे कोई इंटीग्रेशन होता है, सेकेंडली कि हम लोग उससे ओडीएस या कोई इंटीग्रेशन पैच बना लेते हैं, तो एमआईएस में क्रिएट हो जाएगा वैसे तो। नहीं, बट इसमें क्या है ना, दो चीजें हैं। हम अभी एनआरएलएम जो एग्जिस्टिंग है वो तो सारा इंटीग्रेट हो जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एनआरएलएम में क्या चीज नहीं हो रही है जो हमें चाहिए, उस टाइम पर एक एडेड वर्क थोड़ा सा एनआरएलएम के लिए होगा कि इस एमआईएस में आप ये भी जोड़ो, क्योंकि अभी आपके एमआईएस में ये चीज हुई नहीं है। भाई हमारे डेटा इंटीग्रेशन का पर्पस सिर्फ ये था कि मैं अपने स्टाफ को ये बोल सकती कि पहले तुम यहाँ एंट्री करो और फिर यहाँ एंट्री करो, ये बिल्कुल मतलब लॉजिकल हो जाता। तो हमने सोचा कि ठीक है, जितनी एंट्री यहाँ हो रही है, लेट्स फेच एवरीथिंग हियर, क्योंकि बस यहाँ इतना रेडी डेटा तो होगा, फिर जो रीच हम लेते जाएंगे वो हमारे एमआईएस में वो लोग चलाएंगे, बस ऐड ऑन डेटा। वो इंटरलॉजिक वाला भी सी गोइंग फॉरवर्ड अभी हमारे भी एमआईएस डेवलपमेंट वर्किंग इनिशियल स्टेज में, बट वी प्लान टू डू इट इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, हम कर लेंगे। आपको बहुत सारा थैंक यू मैम, आप हमको भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम इस 5 डे वर्कशॉप में आए और बहुत यूजफुल था। और सर जो हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं, सर आपको भी बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। नहीं, आपकी जो इस बीच में हम लोगों को गाइडेंस में पूरी रीड का टीम और हमारे सब कलीग्स, मैम डेफिनेटली मैंने जो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखा वो ये था कि आपका ILSP का जो डेटाबेस और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यूएसआरएल में कुछ अभी कमियां हैं उसमें। हम लोग कई बार डेटा को जैसे है ये अलग अलग जगह से हमें लेना पड़ता है, एक जगह पर इंटीग्रेटेड नहीं है कि हमें एक जगह से सब कुछ एक वो एंट्री करें और सब कुछ हमें उसका फिट हो जाए, वो नहीं, वो कमी है मैम। तो वो शायद हम कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे दोनों के उससे। और सेकंड, जैसे हमने न्यूट्रिशन का एक पॉइंट देखा था जब हमने विमेन और उसकी बात किया था कल के प्रेजेंटेशंस में, तो मैं यहाँ एनआरएलएम के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे न्यूट्री गार्डन का कॉन्सेप्ट होता है ना, न्यूट्री गार्डन का, और हमें ना बहुत बड़ा टारगेट उसके लिए मिलता है। तो हमें अभी जो मिला होगा 6-7,000 से मतलब 20,000 के आसपास न्यूट्री गार्डन बनाने का टारगेट मिला हुआ होगा, और उसको ये लोग पूरा नहीं कर पाते हैं ब्लॉक्स के, सिर्फ इसलिए कि उसमें इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स की कमी, जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि एक टेबल पर सबको बैठना है। आइडिया ये है कि हमारा एक महिला किसान सर्वे होता है हमारे एनआरएलएम में, एक एमपीएससी प्रोजेक्ट भी चलता है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, और एक हमारा फार्म लाइवलीहुड ब्लॉक्स हैं। तो फेजिंग आउट ऑफ होती है जिसमें कुछ ब्लॉक्स को फार्म लाइवलीहुड ब्लॉक्स के रूप में लेते हैं। देखिए अपने जनपद की मैं बात करूं तो हमारे कैंसर बहादुराबाद और भगवानपुर फार्म लाइवलीहुड ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे हमें महिला किसानों का सर्वे करना पड़ता है, उनका पूरा डेटा पेश करना है, 1 सिंगल पेज फॉर्म है मैम। उस एक पेज में जब वो एसएचजी की महिला ही करती है, एक्टिव वुमन करती है, और एसएचजी मेंबर्स का ही डेटा लेना है इसमें, और किसी नॉन एसएचजी का नहीं लेना है। तो इसमें मैम ये भी पता चल जाता है उनके पास कितने कैटल हैं, कितना पशु है उनके पास में, उनके पास लैंड कितनी है, ये डेटाबेस में कैप्चर हो जाता है। उनके पास में भूमि का कैप्चर हो गया, जॉब कार्ड बनने का है कि नहीं ये कैप्चर हो गया, पशु कितने कैप्चर हो गया, बाकी एसेट्स कैप्चर हो गए। अब एक पेज का ये सर्वे फॉर्म हो गया, ब्लॉक में ये मौजूद है, इसके बावजूद हमारे ब्लॉक में जो बंदेगा को देख रहे हैं वो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते और उनको न्यूट्री गार्डन के लिए प्रमोट नहीं कर पाते। तो टारगेट न्यूट्री गार्डन का हमारा अनफुलफिल्ड रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर हैविंग दिस डेटाबेस विद अस, जिसमें वो बता रहे हैं कि इतनी महिलाओं के पास इतनी जमीन है। तो ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, हमने उनसे कहा कि आप पूरे इस फॉर्म को उठा लीजिए, इतनी महिलाओं को आप सीधे 1,500 महिलाएं आपकी महिला किसान सर्वे में आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जस्ट इसको लेकर के आप मनरेगा की कार्य योजना में डाल दीजिए, उनको एक न्यूट्री गार्डन दिलवा दीजिए। तो ये जो गैप्स है ना मैम, ये गैप्स भी फिल हो जाते हैं हमारे, तो हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट जो है ना महिलाओं का, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा विद इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो ये पॉइंट था। और दूसरा स्टेट लेवल एक ही बनाओ, स्टेट लेवल पे बनना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट उसी डेटा को और हमारा हाउस होल्ड सर्वे भी होता है, हमारा हाउस होल्ड सर्वे भी है, हाउस होल्ड सर्वे करते हैं हमारे इसमें, तो हाउस होल्ड की पूरी चीजों के बारे में हम डेटा उसमें दे देते हैं, हम तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और बाकी वही है कि हमें इसमें से
डेफिनेटली आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ाने की बात है। रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट है, मतलब उसकी गति को हमें बढ़ाना है। तो ऑलरेडी जो हमारी बहुत अच्छा, मतलब मुझे इसमें भविष्य से दिख रहा है, क्योंकि जो हमारी एंटरप्राइजेस उभरने लग गई हैं उनको हम यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे करके आगे ले जाएंगे, और साथ साथ जो हमारे पोटेंशियल एरियाज हैं उनमें हम उनको लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर with the introduction of this project। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इसका पार्ट बने हैं। आपने सही कहा कि हम फॉर्चुनेट हैं कि हम इसका पार्ट बने हैं, and we would definitely like to contribute our best to ensure that this comes to a successful ending. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you so much. मैं कपिल उपाध्याय और अभी वर्तमान में टीम लीडर उत्तराखंड से पहले मेरे प्रोग्राम की बात है। मैडम इसमें एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे इंटरवेंशन है उसके बाद में जो भी चेंजेस आए हैं, जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है कि हमने इतनी लैंड हमने कन्वर्ट कर दी इरिगेशन में या हमारी वेस्ट लैंड की हमने उसको कल्टीवेशन लैंड में, तो इन चीज़ों की एडवोकेसी हमको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अपने स्टेट लेवल पे इस तरीके से करनी चाहिए कि उनमें कुछ फर्क दिखाई दे कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में जो भी डेटा रिलीज होते हैं बिफोर इंटरवेंशन ये था और अभी इंटरवेंशन के बाद में ये है, तो वहाँ पे भी एक यस सर, तो इस तरीके की कुछ एडवोकेसी हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी और स्टेट लेवल से भी होगी ताकि डेटा में परिवर्तन इसमें दिखाई दे। और मैडम आपका जो लैंड रिव्यू हमारा मैडम द्वारा जो प्लान है उसमें एक इससे पहले जो हम लोग लैंड कमीशन में जब काम कर रहे थे तो उनका एक कॉन्सेप्ट था लैंड न्यूट्रिशन गार्डन का, जिसमें कि वो राउंड पूरा एक न्यूट्रिशन गार्डन का बनाते थे 2 लाख के जो यहाँ के उत्तराखंड के था, जिसमें कि वो विभिन्न प्रकार की सब्जियां उसमें लगा रहे होते थे और 300 ग्राम पर मेंबर पर उसका एक का उन्होंने टारगेट रखा हुआ था कि जिसमें कि उन्होंने